uh Hello guys, welcome back to the channel. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal to all the members. Welcome back to the channel Crypto Global 100, and I think everything is recording perfectly. Yeah, the frame rate is good, so let's start the video, guys. Today we have a Bitcoin dropping to approximately $28,000. Here you can see 28,700, and I predicted that BTC is going to go down to 28,000 a month ago. And if we go and take a look at the other altcoins, you can see market is red, bloodbath everywhere. So in today's video we are going to discuss about the different scenarios, and a lot of people have asked me in the DMs which coin should they buy, which coin is it the right time to buy or not. So we're gonna take a look at those things for today, and I'm also going to discuss the news, Bitcoin news. Unfortunately, my partner is not available right now, Harris. So I have pinned the message. You can check here. You can join our Telegram chat group. Okay. So let's start the video without wasting any time. So guys, this is the Bitcoin. Okay. You can see here the price came down to $28,000. Here you can take a look at here. This was the perfect support zone. If we go back in the history, just take a look at here. We have multiple wicks going down to this area, 28,000. Okay, 28,000, and it was rejected multiple times. So you can see, and in this region you can see we are in the consolidation zone in between 42,000 to $28,000. So if you take a look at here, we are in the same zone. Just take a look at here. Okay, BTC in the same range, not breaking out, not breaking down. But today's candle is very important, guys, very important. The candle which is in formation right now, this one, it is very important. If we got we have rejection from the top side, from the 33,000, this at this area. Let me mark the price, guys. Here at this area you can see this one. Yeah, okay. If today's candle closed below 33,400, then it would be a bad scenario for BTC. Why? Because usually what happens when a certain level is broken, the next candle moves up and gets rejected, and if it gets rejected, it means a level has been broken. So we need to wait for the confirmation, either this level has been broken successfully or not. We have to wait for it. Right now, you can see here we have a long wick on the downside, but also on the upside, and the body of the candle is very small candle, very small body. Okay, so indecision in the market right now. There is a lot of fear in the market. Let me check the greed and fear index. It has to be very low right now. You can see here the price. Let me go and check the crypto fear and greed index. You can go down alternative.me, or you can simply Google it, fear and greed index. You can see it, extreme fear in the market. It means that a lot of retailers wanted to sell right now. There's a fear in the market. Whenever there is a fear in the market, what institutions do, they buy. Simply they buy. For retailers, it's a panic time. For institutions, it's a shopping time. Okay, so you can see here
BTC went down 3%, 4%, and along with all coins went down to 6%, BNB down to 14%, Cardano 9%, XRP 15%, Dogecoin 14%. So a lot of majors are approximately 10 to 15% down from their initial point. So what's next? What could be the next possibility of Bitcoin? Well, we have to wait for this candle confirmation. Let's take a look at the liquidations, the inflows, guys. This is an interesting fact here. If we take a look at the BTC inflow to the Binance, we can see here, just let me make it zoom in a bit. Okay, let's take a zoom out would be better. Let me zoom out a bit. Let me refresh it, guys. Let me refresh it for you guys. Just wanted to show you some interesting phenomena, interesting things. Let me show you the inflows. Okay, if I go down, you can see here Binance inflow. Okay, it means that Binance BTC were transferred to the Binance wallets. Okay, what happened? Downside, you can see the date, and on the right side you can see the the price of the BTC, and this orange line shows the amount of BTC when it was transferred to the Binance wallet. If we take a look at today's video, today's date. Let me zoom out again, guys. Don't know why is it not working, guys. Sorry for the interruption, guys. Sorry for that. Let me make it full shot so you guys can easily see what I'm talking about. If we take a look at the price and we take a look at the inflows, just take a look at the last bar. You see the amount of BTC inflow to the Binance. What happened? You see here, 15th of June 2020. What happened after that? See, the price went down. You see, whenever there is an inflow, the price went down. Just let me show you guys. Large amount of inflows, price went down. Inflows, price went down. You see here, large amount here. Large amount of inflows, price went down. You see the pattern? A large amount of inflows, price went down. Inflows, price went down. Okay, so this is the scenario. This is the Binance inflow, guys. So keep an eye on this chart as well. This is a crypto quant. You can also join their Telegram group. They mention very important things. They use to alert important things. So let me take a look at the chat box. Do we have anything? T-Fuel please. Okay, T-Fuel. Okay, we have a request for the T-Fuel. Let me check the T-Fuel, guys. T-Fuel theta. T-Fuel, we have a request for the T-Fuel. Okay, I have drawn the resistance and support lines for now, and you can see here price went down to this area. Okay, T-Fuel is currently hovering over the support area. You see a long wick downside on this area, near the demand zone, and then the price came up because the BTC recovered for some time. So if the candle closes above this area, okay, above the 0.42, okay, if the candle closes above 0.42, this candle, then we can say the price would be hovering over this support area. There would be a consolidation phase, the consolidation area, okay, at this area, around this point. Okay, so right now it is near the support. If we break below this, if this candle closes below, very important, guy, very important. If this candle, you can see here, let me show you this one, the input, the 50 EMA. The price is testing the 50 EMA on the daily. Here you can see the price is testing the 50 EMA here.
So if it closes below this area, then surely we would be again going down to this demand zone. This is the demand zone. The next area of support would be around this one, okay, 0.33. So I would suggest you can buy around here, but wait for the confirmation. You can place your buy order around here, around this area, okay, and then you can average down your entries, as we already down to, we already down approximately from here to 42%. It went down and then 26% now from its initial point. So you can buy, but wait for the confirmation. Wait for the confirmation of this candle. If we take a look on the low time frame, you can see here it is forming candle. The candle has closed above this, so this is a good news for now. And this is the 200 EMA, the white line. It is going to test at this area. You can do a scalp, a short scalp around this area, like, you know, maybe a scalp of 5% at this area. So important zone. This is the important zone, 0.47. This would be our next resistance for now. If I zoom in a bit, you can see here this could be our next support. This could be our next local resistance. Sorry about that. Okay, the price is moving on the upside, but wait for the confirmation. This candle is above the previous candle, so it's a good news. It's a good confirmation for the price to move in the upward direction. So you can do a scalp, you can buy around here, and that's it for the T fuel. Okay guys, moving on, we have a lot of news. Bitcoin crashes below 30,000 K for the first time since January 2021. Things in the cryptocurrency market are looking increasingly bad as the price for the Bitcoin just crashed below 30,000. Okay, you can see here other cryptocurrencies are also following suit, with most of the altcoins charting double-digit declines, double-digit 10%, 15%, which is happening right now. And you can see here the largest single liquidation order happened on Bybit. It was the Bitcoin position with a face value of $5.4 million. Guys, just imagine $5.4 million. A single liquidation happened. Okay, moving on. This is also interesting news. Iranian police confiscate 7,000 crypto miners. Again, the same kind of news. The miners news, the miners FUD created by the China yesterday, and now today the Iranian makes the price went down. Another news, Cardano price analysis. ADA bears take control, will hold $1 or not. Let's take a look at the ADA, guys. ADA Cardano. Let's take a look at the Cardano, guys. So what do we have here? Okay, we took a sharp decline and then a move on the upside. It is approaching the resistance for now. Very important time for the Cardano for now. If we take a look at the daily chart, you can see here we are approaching the resistance area. So this usually happen, guys. This usually happen when you break a certain area. A wick down get rejected, and then a wick on the upside also gets rejected. If it gets rejected from the top side, it means we have successfully broken the the support area. So we have to wait for the confirmation. Either we are in the, again we have stopped the downtrend, or it is going up. We have to wait for the confirmation. Right now the ADA is going on the upward direction like all other altcoins. If I take a look at the XRP USDT, let me show you XRP. You can see here the XRP is down right now, and you can take a look at, it's a sharp decline. You can see here sharp decline, a percentage of approximately 42% down from the previous swing high. This is the previous swing high, guys. Let me show you the previous swing high, this one. If I turn off all the EMAs and the volumes, you can see here I draw the
this trend line. This is the squeezed movement. I told you guys few days ago that either it is going to move on the upside or on the downside. And what happened, you see, once it broke down of this triangle, it went down. Sharp movement on the downside. So right now we are heading for the XRP, guys. We might be heading towards this area. This is a good area. Let me draw a zone on this one. That would be good area. Let me draw the rectangle here at this area. So this is a good support area, guys. Good support area for the XRP 0.42. It's extremely cheap, guys. It's extremely cheap. It's shopping time, guys. Shopping time. Let's take a look. Do we have any questions? Okay. ATA and Matic. Okay, by Rahul Kumar, ATA, thanks for the live. Yes, ATA coin and so TLM is chase. Okay, guys, let me analyze it for you. Okay, TLM, ATA and Matic. Let's take a look at the Matic first, as it has been in the spotlight for quite a few days. Let's take a look. Let me turn off these things for now. Okay, so this is an Matic price prediction, guys. Okay, let's take a look at the Matic. Let me delete everything, make a cleaner chart so you guys can easily identify the points, the areas. So right now, if we take a look at weekly area, let me show you the weekly area. Let me delete everything for you guys. Okay, guys, I'm gonna do the analysis on Matic. Okay, first let's take a look at the price here. It made the swing high here. If we go to the daily areas, here you can see we have one spot here, this one. Okay, perfectly bounced off, so we can call this one an important area. Now the next up, the price came down here. This is the next swing low. Got it? Okay, I'm gonna mark the price here as well, 0.74. Now next up, what's the next zone we would be looking for? This one. Okay, this is the I have taken this one, the body, the lower part of the swing low candle. Okay, so I'm gonna make it yellow, and also I'm gonna draw price analysis, price tag here at this one. Okay, you see, this is a good support for now. Why price came down to this area, guys? Can somebody tell me why it came down to this area? Why it wicked down to this area? Let's take a look. If I go back in the history, okay, let's take a look at the history, guys. Let's take a look at, might be this one, could be in accordance with this. You can see here, this one. Okay, I have found the spot. Why, my question is, why this price went down to this area, big to this area? Why not this area? Why not this one? Why not this one? Why it went down to this? Let's find out the answer here. If we take a look at this zone, you can see we got multiple rejections at this area. You see, multiple rejections. So if I draw a line around this one, and this area, and let's take a look in the future, you see here, oh god, yeah, this one, swing low, swing high, sorry, this one. Now you see here the price came down to this area. So there are multiple areas, but I would take this one to be the strong support as compared to this one, because the red candle is not usually taken as a swing high. Usually the green candles are taken as swing highs. So I would mark this one to be the swing high. So this is on the 4-hour chart, guys. Okay, now we have the previous swing low here at this zone, this one. Okay, and you can see the price is getting rejected from the swing low, and the price would be around this one.
So we need to break above 1.18. This price, the Matic price movement needs to close above this candle, which is in the formation right now. It needs to close above, because we have broken the this one was the support. Previously it was the support, and now it is acting as a resistance. Okay, this is SNR. Support has been flipped to the resistance. Okay, understand guys? So we have a support around, if I'm talking about the strong support areas, this ain't a strong support. I'm gonna delete. Yeah, this is on the daily one. We can also take a look at, if I delete this one again, and we take this one as well on the shorter time frame. Let me mark it white and dashed area. Now this could be yeah. So the area around this one, let me analyze it again for you. This one, okay, 1.05 is a good support area. Okay, it's a good support area. The next would be this area. Okay, this one. The next, these are the support areas guys. Okay, these are the support areas. Now if price or this candle closes above 1.18, then we would be heading towards the next target around this one here. I would mark this one around this one guys. Let me show you this area. Okay, this would be our next target if and only if this candle closes above. We would be heading towards 1.31. okay, but if this candle closes below, then we would again going back to 1.05, and if this level breaks, then we would be heading towards 0.89. so these are the short-term price analysis of the Matic. So you also have to take a look at the volume. You see a large, you see here a large buying volume, huge buy volume you see here. So it means we have a lot of buyers at this area. Whenever the price comes down to this area, we might see a huge volume, a good buying area, a good zone. If I draw you know, this volume profile for, might be this previous swing low to right now would be, yeah, this is the resistance it is showing right now. Okay, let's move on. We have many more. We can we also get XVS coin by cake का भी बता दें please. Surely like भाई ज़रूर आप सब के लिए आया हूँ बिल्कुल. And then can we also get XVS and ATA? अच्छा भाइयों, I will also try to, yeah, Matic has been done. ATA मैं अब करूँगा इसके बाद, और then TLM as usual. TLM के बहुत से फैंस हैं हमारे इस चैनल पे, और usually most of my subscribers are from India, Pakistan, Bangladesh, and but also from the Australia, England, USA as well. So इसलिए उनको समझाने के लिए भी थोड़ा सा मुझे समझते हो भाइयों. So I will now do a price analysis on ATA. Then we got request for the TLM. Now the ATA coin recently launched. Okay, recently launched. If we take a look, yes, on the 7th June 2021. Okay, ATA, you see a low volume is very low. If I zoom in a bit, zooming in, we have this area, perfect area. You see here swing low. So what I'm gonna do here, the area 0.54. okay, this is the area, perfect support. Right now it is acting as a resistance. You see here we have rejections from this area. Now the next up here, if we take a look at the 1 hour chart, we have to narrow down because of the data is not, there is not you know, data is very less. That's why difficult to predict such coins. If I mark this one as well, sorry, let's take a look at the Fibonacci levels from this one and this one here. Okay, now these are the levels guys, these are the Fibonacci levels. If we take a look,
through this, we can see here how these levels have been respected. You can see here respection. Okay, let me show you. Yeah, this one. The next price target would be around this one, 0.45. Let me mark the area. This one, okay, 0.44, 0.44, 0.45. If and only if we get a rejection from this area, okay, we get a rejection from 0.54. 0.54 is a strong area. Just keep that in your mind, okay, keep that in your mind. This is a strong area, very strong area. And also keep an eye, this is a swing high candle, so we are going down and it has been rejected from this swing low, okay, this area. So we need this candle to close above. If it closes above, then we would be heading towards the area of 0.61, okay, this area. So keep an eye on these levels, okay, these levels. Right now this candle, these two candles have been rejected. These are the 1 hour candles. So on the shorter time frame, we might be bearish because of these two rejections. Okay, the price needs to close above, otherwise we are going down. Again, we might going to retest 0.44. It all depends on BTC, guys. Simple is that. BTC needs to move up, otherwise things would be bad for all the altcoins. Okay, so on the shorter time frame, ATA coin, ATA coin is getting rejected from 0.454. Strong area, you can see here, strong area. So keep an eye on this candle. If it closes above, then you can place your buy orders. So wait for the confirmations. It would be a good buying zone if we close above 0.454, and then we get multiple signals for the entries. Right now 13, it is squeezing in between the 13 and the 21 EMA. Now let's take a look at the TLM. We got the TLM as well. TLM, okay guys, just take a look at this one, guys. Just take a look at this. I draw this level, this area a few days ago, and you see how perfectly it went down to this area. Just you can see, you can imagine how perfectly I have drawn these two lines, these two trend lines. And I told you guys that these are the Fibonacci levels that these need to be kept in mind. So right now, what is the current scenario? Swing low. Here you can see the swing low candle. Okay, it is getting rejected, so I'm gonna draw a level around this one area, perfectly synchronized with confluenced with this one. Okay, 0.0850 is the resistance. Okay, the support level would be around this one, 0.06. We got another area of resistance around this one, 0.0994. Then would be this one, this swing low. Okay, so I would mark this one as well. The price of TLM has been in the downtrend for a long time, guys, for a long time, as you can see here. So right now we need, you see, every altcoin is following the same pattern. Every altcoin is following the same pattern because of the BTC price movement. Every coin is near the resistance. So you can, whatever the analysis I do, every altcoin is doing the same pattern. It's following the same pattern. But TLM, I had told you guys to stay away from the TLM because TLM is not doing anything right now. They haven't done anything, any airdrops or anything like that. It's been in the downtrend. You can see, if I go to the daily chart, you can see here it's been in the downtrend. You see the general picture. Just take a look at the overview. See here, the price
kept on falling, but you can see the momentum is shifting. Might be we might see some momentum on the upside, because you see the body of the candles are getting smaller and smaller. You see the body of the candles are getting smaller and smaller. We need some strong upward movements, strong upward movement, then we can say the price is in the uptrend. Right now we might be near the bottom, but we don't know. We have broken the bottom of this area. And if I go to the MX exchange, I will show you guys. There we can get another idea of the MXC TLM. Okay, so TLM coin, I think they have changed the address of the TLM. Let's take a look at the TLM. Why it is not showing us? I think they have changed the data here on the MXC exchange. If I go to TLM, you can see here TLM coin. We're gonna take a look at the 1-day chart. You can see here as well, we have broken the support area, and it is below all-time low. You can say all-time low. You see here all-time low. So if I turn on everything again, we have multiple areas. Right now it is in the downward bearish pennant. Okay, this candle, we have buyers, we have sellers as well. So but we are still below this area of resistance, 0.0850. so I would suggest you guys to stay away from this. You can buy to average down your entries, but I don't see a thing right now. Let's take a look at the coin market cap TLM. You see it is ranking on 301. You see here, and you see the volume, guys. Volume is very low, 1.7 only. 1.7, 2.0 billion millions. Okay, very not a lot of I would suggest you to stay away from the TLM. You can see here, you can just take a look at this one. Okay, just take a look at this one. Let me show you the price when it went up to $0.7. What was the volume? Just take a look at the volume, $1 billion. Okay, that was the volume. Right now, if you think the price is going to get to $1, the volume needs to 10, it needs to be 10 times this volume. It means $10 billion, and it is not possible. Even when the price went down to 0.6, you can see here 0.6, what was the volume? You see here, $414 million, and right now where we are standing, only 20 million. Okay, 20 million. So how could you say that the price is going to move up? The volume has decreased. That's why I'm telling you guys to stay away from TLM. The volume is very low, guys. We need large amount of volume, otherwise the price is not going to go anywhere. So always go to the coin market cap. Okay, and if you take, for example, if Ethereum made a swing high, okay, if the Ethereum or any other coin made all-time high, just try to spot that area, and also spot the volume around that area. You see here, when the price went up to, see here, when it went up down to 633, see here, 3 billion. Okay, 3.9, almost $4 billion when it went up. Right now the volume is again the same, $4 billion. But BNB, exchange coin, one of the biggest coins, high volume coin. So that's why you see a large amount of movements on the upside and in the downside. It's not like only the price is going down and down and down. Okay, if we take a look at the Wink, okay, Wink link, okay, you see here the volume around here. You see when the price made all-time high, what was the volume? $3 billion. Okay, and
What happened after that? The price went down and down and down, and the volume also going down. And right now, if we take a look at here, the volume is only $48 million. So volume pushes the price. Okay, a lot of volume means the price. If there is a, if you see there is a volume, you know, going in, inflowing to the coin, you see they are accumulating, you see. So that's how things goes. Okay, also can we also get XVS coin by cake का भी बता देना. Sorry like by late हो गया, थोड़ा late हो गया, sorry for that यार, sorry for that. अगर XVS, okay, XVS USDT pair, I'm gonna go for the XVS. यहाँ पे भी देख लेते हैं हम. XVS का Venus है ये basically. Venus currently ranked at 134 coin market cap पे इस वक्त ये है 134 पे है with 52,000 people watch lists on the watch list. और right now the volume is around $295 million. Yeah, good volume अच्छा है. And if we take a look at the price, if I go down, let me delete everything for you guys. And if I go down to here, yeah, it's a good area, good buying spot. I can say that. If we, this is the weekly chart, okay, weekly. This one is a good spot area. Let me show you this one. This one 19.8, okay, 19.8, good spot area, absolutely perfect area on the weekly chart. Okay, and this could be our next spot around this one. But first I'm gonna move on to the daily one so we can spot the swing high. Here we have this is the swing high. This one is also swing high. I would mark a zone in between. This one. So this one, I would take this one as well, 12, and this one as well, this one. If I move on forward, okay, the zone in between the $12 and $7 is also a good spot, a good buying spot. If I go to the 4-hour chart, if I take a look, we have to find multiple time frames to find a perfect spot. That's how things go. You can see here 4-hour chart. On the 4-hour chart we have multiple swing highs. We have, this is the swing high, we have this swing high, so we have also this swing high. If I draw, like, you know, multiple areas like this one, it would make you know, difficult to read the chart. So that's why I told you guys the area between the $12 to $7 is a good buy. It's very good buying area. So I would mark this one the area of buying. So let me go to the chart here, the area between this one. Let me delete these two lines as well, and I'm gonna mark the area of this one. This is a good buying spot, but you can also buy around this area. But here you can see this candle have already got rejected from this area of, which was previously a support. Now it is behaving as a resistance. You see, there can be a bear trap. If I show you the price here, this one, okay, 19.8. okay, this is a good, this previously it was a good spot area, okay, but right now you see here the price has been rejected from this area. So I would suggest you guys, you can place your buy orders around 12.9 to 7.9. good area to buy. Don't sell it now, okay, don't sell it right now. There would come a time then when you gonna enjoy the profits. Okay, this is a good spot as well, good target.
let's say if you know buy around here, let's take a look at here. If you buy around this area, let's suppose this one, then how much profit can you take? Yeah, you can take 80% profit if you buy around this one, but if you buy around here on this area, it would be 170% profit. So accumulating XVS is a good choice, but you have to, you know, average down your entries. Averaging down the entry is a good thing. So you can place your buy orders around this area, 16, but I would suggest $12 to $7 is a good buy area, because right now the BTC is fluctuating. You never know what's the bottom where the BTC is heading towards, so we have to wait and look for the you know, price of BTC. So let's take a look at the other things. Okay, like मुजाहिद, ओके लाइक भाई, मैं अब आपके लिए केक का एनालिसिस करने लगा हूँ। केक बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, बहुत ज़बरदस्त, जस्ट लाइक BNB। केक का यूज़ केस बहुत फिट है। अगर हम जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पर और देखते हैं केक को, पैनकेकस्वैप, जो भी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, आपको पैनकेकस्वैप जो है वो उस पे जाना पड़ता है और BNB बाय करने पड़ते हैं। तो BNB और पैनकेकस्वैप ये दो बेस्ट कॉइन्स हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। बेस्ट बाय, यू कैन सी हियर। लाइक भाई, इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस वन, बहुत परफेक्ट एंट्री है, $9, एब्सोल्युटली चीप। मैं तो कहूँगा आप बाय कर लें, इसको बाय कर सकते हैं आप इसको $9 के अराउंड में। और इसका जो एब्सोल्यूट बॉटम है वो $8 है इसका। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैंने लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे कुछ दिन पहले, काफ़ी अर्सा पहले। मैंने बाय किया था यहाँ पर जब ये न्यूली लॉन्च हुआ था इस एरिया पे। ओके, इस एरिया पे यहाँ पर मैंने बाय किया था इस एरिया पे तकरीबन $1000 का, और देन प्राइस यहाँ पर गई तो मैंने इसको सेल कर दिया था $185, 185% पे अराउंड $28। तो अगर आप उस हिसाब से भी देखें तो ये दोबारा उसी रेंज में आ चुका हुआ है जहाँ पे आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं लाइक बाई। सो आई थिंक यू कैन बाय अराउंड दिस एरिया, $9, इवन 10, 9, 11 इट्स अ गुड बाय, चीप बाय है, बहुत ज़बरदस्त है। होल्ड करके रखें क्योंकि केक का तो आपको पता ही है, केक के यूजेज बहुत ज़्यादा है। सो केक BNB अ गुड बाय, चीप बाय होगी, आप इसको बाय करें और रखें इसको आप होल्ड करके रखें, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा आने वाले टाइम में। इनकी बर्निंग चलती रहती है और इनकी जो है फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आप देख सकते हैं 39 नंबर पे रैंकिंग इसकी ऑन द CMC विद वेल ओवर 265,000 ऑन द वॉच लिस्ट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑडिट्स भी उसके हुए हैं, सर्टिक से भी, स्लो मिस्ट से भी। और देन इनका वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हैं 343 मिलियन, और सर्कुलेटिंग सप्लाई ओके 184 मिलियन, गुड, बर्निंग चलती रहती है इनकी। सो यू सी द टोटल वैल्यू लॉक्ड हियर एज वेल, लिक्विडिटी है ये, तो इट्स अ गुड बाय, आई वुड गो फॉर द पैनकेक। नेक्स्ट अप लाइक भाई, अगर आपको कुछ हो रहा है, राहुल कुमार, डॉज कॉइन विल कॉइन्स रिकवर? जी राहुल भाई, कॉइन्स विल रिकवर इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली इट्स गोना रिकवर। और डॉज कॉइन या डॉज कॉइन का राहुल भाई बड़ा डिफ़िकल्ट एनालिसिस होता है क्योंकि ये न्यूज़ पर और ट्वीट्स पर चलता है। अगर हम देखते हैं इसको डॉज कॉइन को, तो ये देखिए मैंने लेवल्स कुछ ड्रॉ किए हुए थे, देखें अगेन ट्रायंगल देखें, जब उसने ब्रेक किया प्राइस नीचे चली गई, प्राइस नीचे गई इस लेवल पर। और ये देखिए मैंने आज ड्रॉ नहीं किए, ये एरिया मैंने आज ड्रॉ नहीं किए, ये मैंने बहुत पुराने ड्रॉ किए हुए थे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने 100 लेवल ड्रॉ किया हुआ था और इसको मैंने ड्रॉ किया था ये लो पे, और ये देख सकते हैं ये इसने प्रीवियस लो पे ही टच किया है यहाँ पर। राइट नाउ अगर हम देखते हैं डॉज कॉइन को, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डॉज कॉइन इस वक्त
जो ये प्रीवियसली ये सपोर्ट बिहेव कर रही थी, अब ये रेजिस्टेंस बिहेव कर रही है, एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस राइट नाउ। प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो अभी जो है ये सीन है कि ये एक्ट कर रही है रेजिस्टेंस के तौर पे। सो वी माइट सी सम स्क्वीज अराउंड दिस एरिया, कंसोलिडेट करेगी, रेंज करेगी इस फेज़ के अंदर, अनटिल एंड अनलेस हम एक साइड की तरफ मूव ना करें। इस वक्त ये जो कैंडल है करंटली जो फॉर्मेशन पे, आज की जितनी भी ऑल्ट कॉइन्स की कैंडल्स हैं ना, जितनी भी कैंडल्स हैं वो देखनी पड़ेंगी, वो देखनी पड़ेंगी कि उनका क्या बिहेवियर है। वी माइट सी सम कंसोलिडेशन इन दिस वीक, ओके, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन होगी, कंसोलिडेशन होगी, और वेट करना पड़ेगा हमें। तो राहुल कुमार, डॉज कॉइन आप ले भी सकते हैं, लेकिन इसमें पम्प्स एंड डंप्स बहुत होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस पम्प की, अगेन a sudden push on the upside, then again price came down, then again went up, फिर consolidation phase में चली गई, then sudden tweet, फिर उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर नीचे। सो पम्प एंड डंप बहुत हुआ इसके अंदर। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द द मीम्स और ट्वीट्स ऑफ द इलन मस्क एज वेल। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको प्रेडिक्ट करना, बट ये लेवल्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं। अगर आप इस लेवल पे बाय करना चाहते हो, गुड बाय है, अच्छी बाइंग है, बाय करो, आप एक्यूमुलेट करो। बाय द एंड ऑफ ईयर प्रेडिक्शंस तो अच्छी हैं कि बिटकॉइन जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, और जो नेक्स्ट स्विंग लो है वो यहाँ पे है परफेक्टली। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस एरिया पे, ओके, सो 0.0875 सपोर्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट होगी इसकी ऑन द डेली। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है तो प्राइस हम देख सकते हैं इसको 0.08, 0.089, यानी इसी रेंज में, इसी एरिया में हम देख सकते हैं डोज कॉइन को, ये जा सकती है इस एरिया में। अगर हम 4 आवर चार्ट को देखते हैं, लेट मी शो, अगर हम थोड़ी सी ऊपर सपोर्ट ढूंढते हैं तो कहाँ पे सपोर्ट आएगी, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है, ये भी एरिया एक अच्छा एरिया है, ये एरिया। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके द एरिया बिटवीन दिस वन, ओके। तो ये भी एक अच्छा एरिया है, बाइंग एरिया। ये 4 आवर पे मैंने ड्रॉ किया, ओके। अब मैं मूव ऑन करूँगा, डेली पे जूम इन करूँगा और शो करूँगा आपको ये वाला एरिया, इस एरिया पे, ओके। इस सॉरी, एक तो ये मैग्नेट टूल मुझे बहुत तंग करता है यार, ओके। ये एरिया एक अच्छा एरिया कहलाया जा सकता है, कम ऑन मैन, ओके। दिस वन 0.14 तक भी जाया जा सकता है, 0.120 तक भी आ सकता है डोज कॉइन। तो ये लेवल्स हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एरिया वो ये है 0.16। उसके बाद 4 आवर पे ये वाली है। जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है, जो जितना छोटा टाइम फ्रेम हो उतनी वीक होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उतना वीक लेवल होता है। और जितना हायर टाइम फ्रेम होता है, हाई टाइम फ्रेम होते हैं लाइक डेली, वीकली, मंथली, उतने स्ट्रॉन्गर एरियाज होते हैं। तो गुड एरिया टू एक्यूमुलेट राइट नाउ। लेकिन फिर भी वही बात है कि इन केस अगर बीटीसी डंप कर जाता है, लेट्स सपोज कि अगर बीटीसी डंप कर जाता है डाउन टू 25,000, 26,000, तो हम देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स और बुरी तरह जो है ना उनकी वॉट लगेगी। तो ये सीन है। अच्छा, नेक्स्ट अप क्या है जी, राहुल कुमार सर, SXP का एनालिसिस दे दो सर प्लीज़। ओके, एंट्रीज टू इफ पॉसिबल। ओके हितेश, मैं अब आपको SXP का भी एनालिसिस देता हूँ। मैं बल्कि इसको यार साइड पे रख लेता हूँ ताकि अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं तो मैं मुश्किल होता है। लगता है आज हमारे पास कोई इंग्लिश व्यूअर नहीं आ रहा है, तो अपने लोकल भाई हैं सारे इंडियन पाकिस्तानी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लोकल बॉयज़, लोकल पीपल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो ये है हमारे पास आज SXP का एनालिसिस। अब मैं हारिस भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ, अगर हारिस कहीं पे हैं, अगर वो
देख रहे हैं तो प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा, और ऊपर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए ये ग्रुप, ताकि हम बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा दे सकें। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? ओके ओके, SXP, थोड़ा सा मैं इस चार्ट को नीचे करूँगा। अगर कोई भी आप मैसेज करना चाहते हैं, प्लीज़ सेंड मी द मैसेजेस ऑन द कमेंट सेक्शंस। ओके, SXP बहुत अच्छा कॉइन है, अच्छा यूज़ केस है इसका। ओके, रैंक्ड 147। पहले हम इसको फंडामेंटल्स को देखेंगे। ओके, सर्टिक ऑडिटेड है सर्टिक से, यानी इससे जो भी कॉइन इस अथॉरिटी से, ये अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, ये अथॉरिटीज़ होती हैं, ऑडिटिंग अथॉरिटीज़। ऑडिटिंग इसलिए की जाती है कि कोई भी कॉइन कोई रग पुल आप पे ना कर जाए, कोई स्कैम ना हो, ठीक है। इसलिए जब भी आप कॉइन मार्केट कैप पर जाएं, आप देखें कि कौन सा कॉइन जो है वो ऑडिट आखिर आया, कि वो कॉइन ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये कॉइन पहली चीज़ कि ऑडिट हुआ है। ओके, डन हो गया। सेकंड थिंग, दो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एथेरियम पे भी है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये दोनों ब्लॉक चेन्स पे ये इसका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। डन, गुड हो गया बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। नेक्स्ट आप हम इसकी कम्युनिटी पे जाते हैं, ट्विटर क्लिक करें आप इस पे, और ओहो ये क्या अकाउंट सस्पेंड क्यों हो गया? डोंट नो व्हाई इट हैज़ बीन सस्पेंडेड, आई डोंट सी द रीज़न। स्वाइप डोंट नो, माइट बी ए न्यू वॉलेट होगा। हाँ, ये आई थिंक उन्होंने कोई पुराना इधर इन्होंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया, ये फेक किसी ने डाला। आई थिंक द स्वाइप नीड्स टू अपडेट देयर अकाउंट ऑन द कॉइन मार्केट कैप। तो ये देखें, दे हैव वेल ओवर 2,68,000 फॉलोअर्स हैं इनके, और अगर हम इनके ट्वीट चेक करते हैं तो एक्टिव कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स है। ओके, स्वाइप इज़ ब्रिजिंग क्रिप्टो एंड कॉमर्स। ओके, राइट नाउ मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स से गो थ्रू कर रहा हूँ, और दे हैव अ वेरी हाई यूज़ केस। यू कैन सी हियर, स्वाइप से आप मास्टर कार्ड पे, गूगल पे एप्पल पे और वीज़ा कार्ड सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, टोकनाइज योर कार्ड फॉर अ टचलेस एक्सपीरियंस विद स्वाइप पावर डेबिट कार्ड। तो इनका डेबिट कार्ड भी बहुत यूज़ होता है, सो इट हैज़ अ गुड यूज़ केस। तो ये एक अच्छा कॉइन है, बाई कर सकते हैं आप। और अब हम देखेंगे इनके एरिया। अब हम जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस पे इसके, कि एरिया ऑफ बाइंग क्या हो सकता है इसका। तो इफ़ आई गो बैक इन द हिस्ट्री, हम देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव मल्टीपल एरियाज़ इस कॉइन का है। जो एरियाज़ है वो काफ़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्यूमुलेशन हुई इस जोन पर, देन एक्यूमुलेशन हुई इस जोन पर। यहाँ पे रिजेक्शंस हैं, मल्टीपल विक्स गोइंग ऑन द अप साइड, गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम द टॉप साइड एज वेल। तो ये भी एक अच्छा एरिया है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ड्रॉ द एरिया ऑफ सपोर्ट। ओके, टर्निंग ऑन द मैग्नेट टूल, वी हैव दिस स्विंग लो, एक एरिया। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, रेड नहीं, येलो मेरा फेवरेट है, येलो ही करते हैं। ओके, मैंने क्या देखा है, ये देखा है। ओके, दिस वन, ये स्विंग लो कैंडल। ओके, दिस इज द स्विंग लो कैंडल। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और देख ले यहाँ से परफेक्टली इस एरिया तक आया। सो हम कह सकते हैं कि ये एरिया एक अच्छा एरिया है, बाइंग एरिया। सो राइट नाउ अगर मैं इस पे प्राइस टैग लगाता हूँ, दिस वन 1.415, अच्छी एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री है। ओके, इस एरिया पे बहुत अच्छी एंट्री है, लेकिन अभी ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, रेजिस्टेंस एरिया क्या है हमारा, लेट मी शो यू 1.754। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ऑल्दो के कैंडल ये फॉर्मेशन में है, दिस कैंडल इन द फॉर्मेशन, अगर ये कैंडल क्लोज होती है बिलो दिस एरिया, ओके, right now this area 1.75 is acting as a resistance। okay, तो जब भी कोई चीज़ रेजिस्टेंस के पास हो तो उस पे एंट्री नहीं ली जाती। वजह कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस वही होती है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करे।
ओके, जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करे। तो लेकिन मैं फिर साथ ये भी जोन ड्रॉ कर लूँगा, ये भी एक अच्छा जोन है। तो एक सेकंड, ये देखें, एक सेकंड, ये एरिया है। ओके सॉरी, अगर हम इस एरिया को देखते हैं, देखें यहाँ पे आप देखें, ये कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई, मैंने इसकी लोअर बॉडी ली, इसकी लोअर बॉडी ली। अब हमें ये कैंडल क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये कैंडल इससे ऊपर जाके, यानी ये प्राइस, कम ऑन मैन, एक तो मेरा माउस बड़ा ख़राब है, दिस वन। ओके, ये एरिया है रेजिस्टेंस का। ओके, अगर प्राइस इस एरिया से ऊपर क्लोज होती है, देन हम कह सकते हैं कि प्राइस अब ऊपर जाना चाहती है, प्रीवियस स्विंग हाई पे टेस्ट कर सकती है, या इस स्विंग हाई पे टेस्ट कर सकती है। तो कैसे हो सकता है, ये देखें, ये रेंज में थी, ये देखें कंसोलिडेट कर रही थी, रेंजिंग, इसको रेंजिंग कहते हैं। नेक्स्ट टारगेट कुड बी दिस वन। ओके, यहाँ पे हो सकता है अपना टारगेट नेक्स्ट वन, अराउंड तकरीबन आई वुड सजेस्ट यू दिस वन। ओके सॉरी, नॉट दिस वन बट दिस वन। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं इस एरिया पे। तो वी कैन गो टू 2.2 एरिया, बट इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारी ये कैंडल क्लोज होती है अबव 1.754 एंड 1.692, अदरवाइज द प्राइस इज नॉट गोना मूव इन द upward direction. If it closes below this area, then surely we're going down to 1.415. और यहाँ पे मैं एक जोन बना दूंगा आपके लिए, ये ओके। अब ये जोन है, ये है जोन, ओके, SXP का जोन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो हो गया ये जोन। नेक्स्ट आप हम कर सकते हैं दिस वन एज वेल। आई एम गोना मूव इट टू दिस वन, दिस एरिया। अब ये देखें, ये है एरिया ऑफ सपोर्ट, ओके, 1.4 1.3। अगर तो कैंडल क्लोज होती है बिलो दिस रीजन, अगर इस रीजन से कैंडल क्लोज होती है नीचे, देन वी आर गोइंग टू अराउंड मूव अराउंड दिस एरिया 1.4 1.3। फिर आप यहाँ पे अपना एक बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये कैंडल क्लोज होती है अबव, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं अगर हमें रिजेक्शन भी मिले यहाँ से। अगर ये कैंडल क्लोज होती है अबव, तो आप यहाँ पे बाय लगा दें और देन यू कैन सेल अराउंड 2.2। लेकिन ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, इस वक्त कोई भी कॉइन आप बाय करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक होगा, नॉट ऑन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि प्राइस मज़ीद नीचे जाए, क्योंकि हमें देखें, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये बॉटम यहाँ पे है इसका, ये है इसका बॉटम माइट बी, यस दिस वन। तो प्राइस नीचे भी जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ BTC, इसलिए BTC की प्राइस को देखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है ना इसका SXP का, वो यहाँ पे बन सकता है अराउंड दिस एरिया। ओके, तो इन केस अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने बाय कर लिया और BTC अगेन क्रैश हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं 1.415 एंड देन अगेन वी सॉ अनदर क्रैश, वी माइट बी गोइंग डाउन टू 0.715। तो ये काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। राइट नाउ अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे, अगर हम वॉल्यूम को टर्न ऑन करते हैं, अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन ऑन द वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वी हैव लॉट ऑफ ये लॉन्ग कैंडल्स, ये लॉन्ग विक्स जो हैं, ये क्या शो कर रही हैं, वी हैव, ये सप्लाई थी, ठीक है, ये सप्लाई थी जो कि ऑब्जॉर्व हो गई है बायर्स के थ्रू, सप्लाई थी जो कि ऑब्जॉर्व हो गई है बायर्स के थ्रू। सो हम कह सकते हैं कि ये एरिया, अब इसकी कंफर्मेशन देखें ज़रा। अगर हम पास्ट में जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, कुछ कैंडल्स हैं लाइक दिस वन, ये देखें, इस एरिया में ये जो सप्लाई आई, ऑब्जॉर्व हुई, प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, फिर इस एरिया में अगेन विक्स देख लें, इस एरिया की विक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इट मीन्स के इट्स अ गुड बाइंग एरिया, दिस वन अच्छी बाइंग है इस एरिया में। तो आप बाय कर सकते हैं इसको, इस एरिया में बाय कर लीजिए और फिर क्या है कि वेट करें, होल्ड करें
और यहाँ पे आप आकर सेल कर सकते हैं, 2.2 पे भी सेल कर सकते हैं। अगर लॉन्गर होल्ड करना चाहते हैं तो डैट वुड बी परफेक्ट, क्योंकि इवेंचुअली हर कॉइन जो है वो ऊपर जाएगा इवेंचुअली, नॉट राइट नाउ, लेकिन माइट बी, हम देख सकते हैं कि BTC कंसोलिडेट करे फ्यू डेज के लिए। सो मूविंग ऑन, ओके, EOI टारगेट सर, प्रो BNB गुड बाय जोन, Dudo, so sir 1.4 is a good buying area. Yes, 1.4 is a good buying area, good buying area. 1.7 भी एक अच्छा बाइंग एरिया है। क्यों बाइंग एरिया? अगर अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं यहाँ पे बाय कर लेता। अगर मैं अपने लिए ट्रेड करता, मैं यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ पे बाय कर लेता, ठीक है, क्योंकि कुछ कैपिटल मैं यहाँ पे लगा देता। ओके, मैं यहाँ पे कुछ कैपिटल लगा देता और कुछ कैपिटल मैं यहाँ पे लगा के रखता। यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगाता, यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगाता कि इन केस अगर तो प्राइस नीचे आती है तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्रीज को एवरेज डाउन कर सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से प्राइस ऑलरेडी डाउन है। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है? हमारे लिए यही बेस्ट है कि हम एक्यूमुलेट करें शॉपिंग टाइम। यू कैन सी हेयर, हमने प्रीवियसली देखा कि जब प्राइस इस एरिया में आई उसके बाद प्राइस ऊपर गई, अब इस एरिया से ही जा रही है, तो वी माइट सी अनदर मूव ऑन द अपसाइड, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या होती है कि कंफर्मेशन ये है कि ये कैंडल क्लोज हो ऊपर, ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल हो वो इधर से विक मारे, यानी विक मारे, शेडो दे, नीचे शेडो दे यहाँ पर। जब वो यहाँ से रिजेक्ट होगी देन हम साथ ही बाय कर लेंगे विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, हम बाय कर लेंगे और प्राइस जो है इवेंचुअली ऊपर जाएगी इस एरिया पर, ठीक है। ये होती है कंफर्मेशन। विदाउट कंफर्मेशन अगर आप स्पॉट पे हैं तो यू कैन नैरो डाउन, यू कैन एवरेज डाउन योर प्राइस। अदरवाइज अगर आप फ्यूचर्स में हैं तो वेरी रिस्की। ओके, एडविन सिनागा, प्लीज एनालिसिस ऑफ डोडो। ओके, डोडो कॉइन कमिंग अप एज वेल। ओके, डोडो कॉइन, अगर आप सबकी कोई भी है रिक्वेस्ट तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Do you want me to do any other coin analysis? Please let me know in the comment section. Okay, राहुल कुमार, मैं आपका डाटा कॉइन का भी करता हूँ। एडविन नागा, प्लीज एनालिसिस ऑफ डोडो कॉइन। ओके, दिस इज द डोडो कॉइन चार्ट। ओके, BNB आई थिंक लाइक मुजीद आपको, ओके मुजाहिद, ओके BNB का मैं आपको बताता हूँ। लाइक भाई थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बस मैं ये 2 कॉइन्स निपटा लूँ, डाटा कॉइन को और डोडो कॉइन को निपटा लूँ, देन BNPPP आता हूँ मैं। तो मैं तेज़ी से करूँगा। हमारे पास है डोडो कॉइन। ओके, डोडो कॉइन कहाँ पे है जी? बिस्मिल्लाह। डोडो कॉइन तो बहुत ही नीचे है। हम देखते हैं कि किसी और जगह ये ऑलरेडी, अगर हम कू कॉइन का चेक करते हैं तो ऑलरेडी गोइंग डाउन फ्रॉम हेयर एज वेल, सो आई वुड गो फॉर द दिस वन। लेट्स टेक अ लुक एट द एरियाज। अब ये अपने ऑल टाइम लो से भी नीचे आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम दिस एरिया टू, लेट्स सपोज हमने लो बनाया यहाँ पर। आई एम लुकिंग द एंट्रीज, अगर यहाँ पर आता है तो दिस वन या दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम फिबोनाची लेवल्स को देखें, ठीक है, इफ़ यू टेक अ लुक एट द फिबोनाची लेवल्स यू कैन सी हियर perfectly bounced off these areas, perfect levels, perfect areas. You see here Dodo coin 76%, okay, 61.80% is usually called a golden area, golden pocket. Okay, why it is called the golden? Because whenever a price gets rejected from this area it moves down, or if it crosses above the price moves up. And you see here how 2 times in the history, in the past of Dodo coin, the price got rejected from this 61.18% and then went down. Okay, again it went up and it went down sharply. So right now if we take a look at the Dodo coin with the help of the Fibonacci areas, Fibonacci levels,
Fibonacci, whatever you call. Okay, you see here we have you know, I think the next support would be around this one. That would be too low. So I will mark another level on the lower time frame. So let's take a look at the lower time frame, क्योंकि फिबोनाची लेवल से हम जो है ना वो डिटरमिन करते हैं कि क्या नेक्स्ट प्राइस मूव हो सकती है. So I would go for this one now and gonna draw this one, but I'm gonna make it blue, so this is not in coincidence with this one. Okay, white one would be good. Okay, अब देखें, let's take a look at here. The next price movement can go to here. अब ये देख लें कितना इजीली होता है. आपको ड्रॉ करने आने चाहिए लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स, एंड यू कैन प्रिडिक्ट द एरियाज. The next level of support would be around 0.685. This is on the 4-hour chart, guys. Just mind you, this is on the 4-hour chart. And if we take a look at in the past, we have two areas like this one. Okay, we have same candle forming here as well. But again, the confirmation was, let me show you the confirmation area. For example, let's say you bought here, the price went down, it was not confirmed. The confirmation was, let me show you here, the price went up, this candle formed a new high here, and then we got a rejection from this area. It means that we successfully, you know, broken this area of, you see here it was the support level, then it went down, and it was then behaving as a resistance area. And what happened after that? The price came up, then went down, and this is the area, this is the time when you buy this one. Okay, we see we have to look for these three candles. First, it should be making a, you know, long wick like this one, this candle is making, and then next one, the next price should be, the candle should be making a engulfing, you know, high body low candle type of candle. Okay, and the third candle should be, you know, it should be wicking down. Okay, retesting the or confirming the level being broken, and then you can place your buy orders around here. And you see here the price then went up and up. So same is the case if you want to buy. You can see here this candle again forming like the one which I showed you. If this candle goes to this area, okay, you know, above this area, then we might see a rejection. And if we got a rejection as well from this area as well, or this area as well, then we can see you can place your buy orders here only after the confirmation. Okay, without confirmation it would be a risky task, it would be very risky one. So I think the level of support, the level of resistance would be around here. But previously, the, you know, the fast, you can say the recent resistance would be this one. Okay, so I would mark a price around this one, 1.1. okay, $1 $1 is the resistance right now, and the support level would be around 0.6 to 0.7. okay, so it's a good support zone. We are in between these two levels, so you can place your buy orders here. Okay, you can place your buy orders around this one. You can buy in case price goes down, you can average down your entries, not a problem. Okay, आप अपनी एंट्रीज को एवरेज डाउन कर सकते हैं. व्हाट्सअप नेक्स्ट BNB भाई. ओके भाई, लाइक भाई. डाटा कॉइन आ गया. राहुल कुमार. ओके, डाटा कॉइन. देखते हैं डाटा कॉइन में क्या है आज राहुल भाई. ओके, मूविंग अप. ठीक है, we have a zone, this one you see here 0.09, perfect area है. लेकिन थिंग इज, अब देखें आप, अगर मैं इन प्राइस को थोड़ा मूव करता हूँ फॉरवर्ड हेयर, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया. अब ये आप देख सकते हैं राहुल भाई कि देखें प्राइस नीचे आई. इस जगह पे क्यों आई? लेट्स टेक अ लुक. यहाँ पर आई. अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि सर्टेन एरियाज, एक तो ये है स्विंग हाई का, ये वाला है स्विंग लो. ओके, प्राइस यहाँ तक भी आई, इससे नीचे भी गई,
ये वाला स्विंग लो भी हमारे पास है, ये वाला भी स्विंग लो हमारे पास है, एंड वी हैव दिस एज वेल। मल्टीपल एरियाज होते हैं। ओके गाइस, अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम पास्ट में जाते हैं, अगर हम यहाँ पर जाते हैं, देखें यहाँ पे, देखें थोड़ा सा गौर करें ज़रा। देखें ये एरिया है, हम देख रहे हैं विक्स ऑन दी अप साइड। ये एरिया है, हम देख रहे हैं विक्स ऑन दी अप साइड। ये एरिया में देखें डाउन साइड आ गई है, इस एरिया में डाउन साइड चल रही है, ठीक है, अप साइड चल रही है, ओके डाउन साइड, ओके डाउन साइड, ओके ठीक हो गया, ठीक है। अब इस एरिया को हम मार्क कर सकते हैं कि यार दिस इज़ द एरिया वेयर द प्राइस इज़ गेटिंग रिजेक्टेड, या ऐसा बिहेव कर रही है जहाँ से प्राइस जो है ना मूव कर रही है। ओके, अब मैं यहाँ पे प्राइस ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये स्विंग हाई हम लेते हैं, या ये वाला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस हैं। ये देखें 1 2 3 4, इट मीन्स कि ये एक अच्छा लेवल है यहाँ पे, यानी प्राइस रिजेक्ट हो रही है मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन द पास्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, ये तकरीबन सेम एरिया बन रहा है। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो ये भी देख लें, ये देख लें। ओके, सो मैं मार्क करूँगा दिस को, इसको स्विंग लो कर लेते हैं ये। ओके, और आई कैन ऑल्सो टेक दिस एज वेल, बट दिस इज़ नॉट अ स्विंग हाई, तो मैं ये नहीं लूँगा, स्विंग हाई को नहीं लूँगा। दिस कैन बी टेकन एज अ स्विंग लो एज वेल, तो आई वुड गिव इट, ये देखें ये भी स्विंग हाई है, ये भी है। अब ये एक लेवल है, ठीक है। अब हम देखें इस लेवल पे मल्टीपल रिजेक्शंस हुई, ओके, प्राइस यहाँ पर आया और मल्टीपल रिजेक्शंस हुई, तो आई वुड सजेस्ट यू कि ये एक अच्छा एरिया है बाइंग का। देखें प्राइस यहाँ से ही आई, देखें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी एरिया पे आई, तो आई वुड मार्क, लेट मी टर्न ऑफ ये एरिया। ओके, ये एरिया एक अच्छी बाइंग स्पॉट है, यानी स्पोर्ट एरिया आप कह सकते हैं कि एक अच्छा स्पोर्ट है, इस एरिया पे अच्छा स्पोर्ट है। क्योंकि अभी क्या सीन हो सकता है, अभी आप देख लें प्रीवियसली अगर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म मूवमेंट, वो क्या है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट छोटी सी बियर, ये देखें बुलिश होता है ज़्यादा बेरिश होता है, बुलिश होता है ज़्यादा बेरिश होता है, बुलिश होता है फिर ज़्यादा बियर, फिर बुलिश, फिर बियर, फिर बुलिश। तो अब नेक्स्ट क्या मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बियर अगेन, वी माइट बी गोइंग डाउन टू दिस लेवल एज वेल। तो राहुल भाई अगर हम लेवल को ड्रॉ करते हैं बिलो डैट, वो यहाँ पे भी आ सकती है प्राइस। तो अभी मैं आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं अभी आपको एरियाज बताता हूँ इसके। ये देख लें 0 पॉइंट, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर BTC डंप करता है तो वो माइट बी सीइंग 0.067। अगर BTC हार्ड डंप करता है, ओके हार्ड डंप करता है BTC, तो प्राइस यहाँ पर भी जा सकती है, 0.06 को टच कर सकती है। लेकिन अगर ये कैंडल क्लोज होती है इस लेवल से ऊपर 0.10525 और इस लेवल से ऊपर, ठीक है, अगर ये जो कैंडल अभी बन रही है, अगर ये कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से विक मारती है ऐसे, तो यहाँ एक अच्छी बाइंग होगी। लेकिन चूँकि प्रीवियसली ट्रेंड को देखते हुए कि प्राइस नीचे ही नीचे आ रही, प्राइस यहाँ पे देखें इस तरह आई, इसने ब्रेक किया जब इस लेवल को, नीचे चलेगी, फिर प्राइस ऊपर आई, ठीक है, टेस्ट किया इसने प्रीवियस स्विंग हाई को, यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया, ये देखें डबल टॉप्स, ओके ये डबल टॉप इसने बनाया। और फिर क्या हुआ, ये डबल टॉप के बाद अमूमन होता ही है कि प्राइस नीचे आती है, प्राइस नीचे आई, ठीक है, यहाँ पे इसने इस एरिया ऑफ सपोर्ट को, ये सप्लाई एरिया कह सकते हैं, इसने इसको टेस्ट किया, लेकिन ऑन द अप साइड रिजेक्शन हुई, ये देख सकते हैं आप प्रीवियसली हेयर, ये रिजेक्शन हुई इस एरिया पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्क्वीज मूवमेंट हो गई थी इसके लिए। फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, देन अगेन गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस एरिया, फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, अगेन टेस्टेड दिस एरिया, प्राइस नीचे आई, अगेन टेस्टेड द प्रीवियस हाई। अब क्या है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट मूव, प्राइस नीचे आ गई ऐसे, और देन यहाँ से टेस्ट करते हुए नीचे जाएगी, अनटिल एंड अनलेस हम एक अच्छी मूव BTC में ना देखें तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर मैं बाइंग एरिया आपको बताऊं, तो बाइंग एरिया एक अच्छा बाइंग एरिया यहाँ भी बन सकता है। ये एक रीजन है,
ये एक रीजन है राइट नाउ 0.10 और 0.96, ठीक है, ये एक अच्छा रीजन है, लेकिन हमें यहाँ से रिजेक्शन तो हुई है, लेकिन ऑन द अप साइड भी हमें रिजेक्शन हो रही है। अब इसकी कंफर्मेशन ऐसे ही मिल सकती है कि अगर ये कैंडल क्लोज यहाँ पर ही होती है और नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ से विक करती है डाउन साइड, तो देन हम देख सकते हैं कि प्राइस मूव अप करेगी। लेकिन लेट्स सपोज कि ये कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे और नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाती है इधर, तो देखें होगा क्या कि प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं जब प्राइस को हम जो है ना लिमिट लगाते हैं। तो आप अपनी प्राइस लिमिट डिपेंड करता है इस कैंडल को देखते हुए। अभी फ़िलहाल ये है कि आप अपना इस एरिया को कह सकते हैं 0.96 पे आप बाइंग एरिया लगा दें, बाइंग टारगेट लगा दें, लेकिन काफ़ी रिस्की भी हो सकता है ये। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर नीचे आ जाएगी, कितने % प्राइस आ जाएगी नीचे, यहाँ से तकरीबन 11% डाउन हो जाएगी। तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो से 11% डाउन हो जाएंगे जो आपने इस पे लगाया होगा। तो इसलिए मैं अमूमन कहता हूँ राहुल भाई या सब लोगों को कि एंट्री तब लें जब कंफर्मेशन हो, साथ ही एंट्री ले लें। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की टाइप्स होती हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, मिड टर्म होता है। अगर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं, तो स्कैल्पिंग में आई थिंक स्कैल्पिंग के लिए अगर हम 1 आवर पे जाते हैं, ठीक है, अब 1 आवर पे जो है तो यहाँ पे भी देख लें आप कि हमें 3 रिजेक्शंस मिल चुकी हैं ऑन दी अप साइड। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, अगेन सेम एरिया देख लें, इस एरिया पे हो रही है। अब इसने कहा यहाँ से रिजेक्शन क्यों ली, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग हाई था, ठीक है। अब अगर तो ये यहाँ पे स्विंग लो बनाना शुरू, हायर लो बनाती है, यहाँ पे विक करती है, तो यहाँ पे आप बाय करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू आर डूइंग द स्कैल्पिंग। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो ये सारा एरिया, इस सारे का सारा एरिया एक अच्छा एरिया, अच्छी बाइंग जोन है ऑन द लॉन्गर रन। ऑन द इफ़ वी टेक अ लुक ऑन द, अब देखें ना, मैं बड़ा चार्ट लेकर आता हूँ, वीकली पर आता हूँ, ठीक है, ये देख लें वीकली एरिया। अब वीकली भी अगर हम देखते हैं डाटा कॉइन को, ठीक है, तो देखिए हम कितना डाउन है अपने इस लो से, ऑलमोस्ट 60% डाउन है, ठीक हो गया। अगर हम 60% भी नहीं करते, अगर हम करंट करते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट द करंट, यहाँ पर अगर हम आते हैं, लेट्स सपोज दिस वन, ऑल टाइम हाई भी नहीं है बल्कि दिस वन, तो फिर भी 60% हम डाउन है, ठीक है, 60% फिर भी डाउन है। अगर आप बाय भी कर लेते हैं इस एरिया में तो यू कैन होल्ड, ठीक है, यू कैन होल्ड बिकॉज ऑलरेडी 60% डाउन है, ठीक है। तो प्राइस ऊपर जाएगी इवेंचुअली, ठीक है। ये आप देखें प्रीवियसली क्या इसका रहा पैटर्न, क्या रहा, 2 कैंडल्स, 2 वीक्स डाउन, तीसरा वीक आप 3 वीक्स डाउन, चौथा वीक कंसोलिडेशन, देन मूव ऑन दी अपसाइड। तो इसके बाद देखें जिस तरह ये 2 कैंडल्स डाउन हुई है, वी माइट सी सम कंसोलिडेशन अराउंड एरिया, अराउंड दिस एरिया। वाई? ड्यू टू द बीटीसी क्योंकि कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि बीटीसी भी क्लियर इंडिकेशन शो नहीं कर रहा। बीटीसी का क्लियर इंडिकेशन शो करना ही वो डिसाइड करेगा कि ऑल्ट कॉइन्स की क्या बिहेवियर है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बीटीसी, ठीक है। तो बीटीसी की प्राइस के ऊपर ही सारे कॉइन्स चलते हैं। ओके, नेक्स्ट अप निशा, do you think BTC will reach? But first I'm gonna take a look at the like मुजाहिद भाई, सॉरी लाइक भाई आपको वेट कराना पड़ा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। या BNB ऑलवेज गो फॉर द BNB यार, BNB बहुत अच्छी बाई है। अब ये है कि बाइंग एरिया क्या है, इसको होल्ड करके रख लें आप, ठीक है। लॉन्ग रन में मैंने जिस तरह आज भी एक वीडियो बनाई थी कि BNB इवेंचुअली इज गोइंग टू हिट $1000 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। Okay, by the end of this year eventually it's going to hit the $1000, simple। तो अगर आप BNB होल्ड करते हैं ना, let me delete these areas for you, okay, like भाई ये अब आपके लिए मैं बना रहा हूँ। okay, अगर हम वीकली भी आते हैं, okay, वीकली एरिया पे हम देखते हैं sorry Nisha, I will get back to you very soon, okay, I will do the analysis on the VET as well, so just stay, I will do the analysis on the VET coin as well। ओके, अभी BTC के ऊपर क्या सीन है, लेट मी ओपन अनदर ट्रेडिंग व्यू ताकि हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकें
बिटकॉइन का भी और ऑल्ट कॉइन्स का भी, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एनालिसिस करना। सो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करें। ट्रेडिंग व्यू ऑन हो रहा है। एक तो ये वेबसाइट है, एक मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, तो इसलिए ओके। So what do we have here? This is the area of okay okay like भाई, ये अब आपके लिए वीडियो, अब आपका एनालिसिस के लिए मैं बना रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं हम, इधर भी देखें तो हम BNB पे, BTC पे जाते हैं, USD पे और बिट्स टाइम पे जाते हैं। डिलीट करूँगा एवरीथिंग और हम देखते हैं यहाँ पर BTC क्या शो कर रहा है ऑन द मंथली। मैं मंथली की बात करूँगा, लॉन्गर ऑन द लार्ज टाइम फ्रेम पे क्या हमें शो कर रहा है। यहाँ पे मैं टर्न ऑन करता हूँ मैग्नेट टूल, और ये भी ठीक है। ये देखें, सबसे पहली चीज़, प्राइस यहाँ पे इजीली जा सकती है 19,000 पर। क्यों? क्योंकि ये लेवल टच ही नहीं हुआ, ये देखें, ये लेवल रीटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये level, this level has not been retested, so what I think the price can go down to 20,000 as well, ठीक है। ये this is on the weekly monthly, so if I go to the, अगर let's suppose अगर ये 20,000 पे आता है, तो जितने भी old coins हैं they are, they're gonna move down to, let's take a look at the, let me show you this one। अगर ये मूव करता है, देख लें 40% डाउन ऑफ BTC, इट मीन्स के 100% डाउन ऑफ ऑल्ट कॉइन्स होगा। दैट वुड बी डिजास्टर होगा हर एक कॉइन के लिए, हर एक ऑल्ट कॉइन के लिए। अगर ये रीटेस्ट करने नीचे आया तो डैट वुड वॉश आउट एवरी रिटेलर फ्रॉम द मार्केट। बहुत टफ हो जाएगा ट्रेडर्स के लिए इन केस अगर ये BTC नीचे आता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले हमें कोई मिल जाए स्पोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार प्राइस इज़ गोना मूव डाउन टू दिस एरिया। अब ये देख लें, ये वीकली एरिया, अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वीकली स्पॉट है, ये कंसोलिडेशन स्पॉट है, ठीक है। ये देखें, अब ये देख लें 27,000 ईजीली आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम रेंजिंग में, देखें रेंज है, ठीक है। ये मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी कॉइन अगर बाय करते हैं तो वी स्टिल हैव अ रूम फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऑल कॉइन्स भी डाउनवर्ड साइड पे जा सकते हैं। विच साइट आर यूजिंग फॉर द एनालिसिस? राहुल कुमार, यार tradingview.com, गूगल पे जाएं, ठीक है, गूगल पे जाएं, यहाँ पे जाके लिखें ट्रेडिंग व्यू, सिंपल एंटर करें, पहली वेबसाइट आएगी tradingview.com, सिंपल क्लिक करें और एनालिसिस कर सकते हैं। ओके लाइक भाई, आई विल गेट बैक टू यू। अब हम आते हैं इस पे ट्रेडिंग व्यू पे, एंड आई एम गोना शो यू द BNB चार्ट हियर। ओके, कंपैरिजन विद द BTC चार्ट। अगर हम कंपेयर करते हैं BTC चार्ट को, तो व्हाट डू यू सी द सेम पैटर्न? या द सेम पैटर्न, ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न, ठीक है। तो ये देखें BTC फॉलो करता है, तो अगर तो BTC डंप होता है तो वी माइट सी सम मूवमेंट डाउन टू 165 एज वेल, बट आई विल गो डाउन टू द डेली फॉर नाउ। डेली पे देखते हैं जी कहाँ पे बन रहे हैं स्पॉट्स। मैं यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स फिलहाल डिलीट करूँगा, ठीक है। हम गोना मूव ऑन टू, बल्कि सब कुछ डिलीट करता हूँ। मंथली पे फिर एक बार चेक कर लेते हैं, मंथली पे हमारे पास क्या है ऑप्शन, ये है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट एरिया, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास मंथली एरिया, इसको हम कह सकते हैं मंथली स्पॉट। ओके, दिस इज़ अवर मंथली स्पॉट, मंथली, सॉरी, ओके, ये है हमारे पास मंथली एरिया। ओके, नेक्स्ट आप हम जाते हैं वीकली एरिया पे, और वीकली एरिया पे भी आप देख सकते हैं कि परफेक्टली इसी एरिया से बाउंस हुआ। अब मैं ड्रॉ करता हूँ प्राइस को यहाँ पर 210, लाइक भाई $210 इज़ अ वेरी गुड बाइंग एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप बाय ऑर्डर अपने पुट कर रहे हैं,
पुट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इस वीक की इस कैंडल के ऊपर, क्लोज के ऊपर। ठीक है, वीकली कैंडल्स हाईली जो है ना वो क्या कह सकते हैं आप इसको, इफ़ेक्टिव होती हैं। ठीक है, बहुत इफ़ेक्टिव कैंडल्स होती हैं। तो अगर तो ये एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ दिस वन, ओके, ये एक एरिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क करूँगा प्राइस को इस एरिया पे, अराउंड दिस वन, ओके। अब हमारी जो रेजिस्टेंस है ना वो यही है। ठीक है, हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी ये एरिया पे 307। ठीक है, ये दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस, ओके, वीकली रेजिस्टेंस फॉर नाउ। इफ price goes above 307 315, then we can say that we are in the uptrend, otherwise price is going down to 210। simple is that, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल थ्योरी है, सिंपल इसके साथ हम जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट आप हो सकता है कि अगर हम उसको जाएंगे तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी हेयर। तो अगर तो ये 315 या 320 क्रॉस करता है तो आप बाय कर लें। हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा $400, 393, तो एक अच्छी आपको मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर तो प्राइस या कैंडल क्लोज करती है बिलो दिस एरिया, देन वी आर गोइंग डाउन टू 210 210। ये वीकली की बता रहा हूँ आपको, ऑन द लार्जर टाइम फ्रेम। इफ़ वी गो डाउन टू द डेली एरिया, हम डेली एरिया को देख लेते हैं। व्हाट एरियाज डू वी हैव नेक्स्ट हियर। अब ये भी एक बहुत अच्छा एरिया, मेकिंग इट वाइट, ओके, आई थिंक मेकिंग इट बोल्ड एज वेल। ये देखना है, ये एक एरिया, ठीक है। तो आई विल मार्क रीजन अराउंड दिस वन एज वेल। तो ये हमारी नेक्स्ट स्पॉट बन सकती है आने वाले टाइम पे। लेट मी क्लोज दीज एज वेल। ठीक है, तो ये एरियाज़ हैं जो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ, लाइक बाई, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। डीप एनालिसिस है इसका BNB का। ठीक है, BNB राइट नाउ, कि BNB के क्या मूव्स हो सकते हैं, क्या इसकी मूव्स हो सकते हैं अपकमिंग टाइम में। अब हमारे पास एक ये लेवल है, अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें, ये देखें कहाँ पे कैंडल्स, यहाँ पे बहुत सी फॉर्मेशन हो रही है कैंडल्स की। ठीक है, इस एरिया पे, तो आई विल मार्क दिस वन। एक तो स्विंग हाई कैंडल का ये एरिया पकड़ लूँगा, ठीक हो गया। एंड देन व्हाट नेक्स्ट शुड आई टेक इन, हम कह सकते हैं ये वाला एरिया भी एक अच्छा है, दिस एरिया एज वेल। अब देखें मल्टीपल कैंडल्स आर फॉर्मिंग इनसाइड दिस एरिया। तो अभी देख लें, प्राइस है भी इसी के अंदर ही है। ठीक है, अब प्राइस का मूव अप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अब हमारे पास नेक्स्ट अप क्या है, ये भी एक स्विंग हाई है, ये भी एक स्विंग हाई कैंडल है। मल्टीपल एरियाज, स्टेप बाय स्टेप मैं एरियाज ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव। अब ये जो बोल्ड लाइंस है ना, बोल्ड लाइंस ये डेली पे हैं। ठीक है, ये डेली चार्ट पे हैं। इफ़ आई मूव ऑन, अब देखते हैं, ये देखें परफेक्ट रिजेक्शन हुई है ना इस एरिया से। इट मीन्स कि ये हमारी लोकल रेजिस्टेंस है राइट नाउ। ठीक है, ये हमारी लोकल रेजिस्टेंस है इस एरिया पे 291 पे। अब अगर आप बाय करते हैं इस एरिया पे तो फिर आगे भी एक बड़ी रिजेक्शन आ रही है, आगे भी एक क्या कहते हैं, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें लाइक बाय, तो जब तक हम इस एरिया को क्रॉस नहीं करते ना 315 वाला एरिया, हम इस एरिया पे टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिपेंड करेगा BTC के ऊपर। लेकिन ऑन द डाउन साइड ये देखें इसने कितना परफेक्टली इस एरिया को रिस्पेक्ट दी है। तो मैं यहाँ पे भी एक लेवल ड्रॉ करूँगा इस एरिया पे भी। ठीक है, ये लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, ये देखें है। अगर हम डाउन साइड पे भी जाएं तो हमारे पास ये एरिया है, ये एक नेक्स्ट अप एरिया। ठीक है, 224। नाउ अगर मैं बाइंग रखता हूँ इन केस, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कैंडल जो अभी फॉर्मेशन में, ये सुबह 5 बजे तक पता लग जाएगा कि कैंडल क्या करना चाह रही है। अगर तो ये कैंडल क्लोज होती है बिलो इस एरिया से, तो मैं यहाँ पे एक बाय ऑर्डर लगा दूंगा 224 पे या 210 इनके दरमियान पे। ठीक है, एक बाय ऑर्डर लगा देता हूँ। लेकिन अगर
प्राइस क्लोज होती है ऊपर इस एरिया पे, इवन दो अभी भी ठीक है, अभी भी आप बाय करना चाहें तो लॉन्गर ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम अच्छा है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्गर टाइम फ्रेम, नॉट द शॉर्टर टाइम फ्रेम। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में करेंगे तो 50-50 है, प्राइस नीचे भी जा सकता है, प्राइस ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मेजर हर्डल ये है 307 से 315 ऑन द अपसाइड। ठीक है, देखें जितना जब हम नए जोन में एंटर होते हैं, देखें जब यहाँ से प्राइस नीचे आई फिर हम इस जोन में एंटर हो गए, ये देख सकते हैं इस जोन में हम एंटर हो गए बिटवीन 400 इन बिटवीन 300। ठीक है, 400 से 300 की रेंज में एंटर हो गए। अब यहाँ से ये कैंडल डिसाइड करेगी कि आइदर हम इस रेंज में एंटर हो गए हैं, ठीक है, या तो ब्रेक होती है तो इसी रेंज में हम रहते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम पास्ट में भी देखें जब प्राइस इस रेंज में रही, रेंजिंग इसको क्यों कहते हैं, रेंज में है, इन बिटवीन अ सर्टन रेंज। देखें सर्टन रेंज का मतलब क्या होता है, ये देखें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो प्राइस 322 पे थी, फिर यहाँ से भी हम देखें तो प्राइस 224, यानी 300 से 224 के दरमियान प्राइस रही और उसके बाद मूव दिखाई। तो ये मार्केट के मूव्स होते हैं। तो अगर हम BNB को देखना चाहते हैं तो वी हैव टू लुक फॉर द ब्रेकआउट ऑन द अदर साइड, आइदर ऑन द डाउन साइड और द अप साइड। तो बिग रेजिस्टेंस ये है कि अगर आप बाई भी कर लेते हैं तो यू कैन सेल अराउंड 291, ओके, शॉर्ट टर्म के लिए, स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, मैं मूव करता हूँ 4 आवर पे, बल्कि 1 आवर पे जाऊँगा। ठीक है, अब 1 आवर पे देखें कितना प्यारा, ये देखें कितना प्यारा इसने रिजेक्शन दी है इस एरिया से। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। अभी ये लोकल रेजिस्टेंस के तौर पे एक्टिंग कर रही है। ठीक है, तो ये 3 कैंडल मूव अप की। नाउ ये क्यों इधर से रिजेक्शन हो रही है, क्योंकि वी हैव some sort of area of rejection या area of support or consolidation, you can call this one। तो अभी जो सीन है ना वो ये है कि अगर तो आप बाय कर लेते हैं इस एरिया पे तो you can do a scalp of 9%, but it all depends। राइट नाउ देखें प्राइस नीचे ही आ रही है, देखें प्राइस जिस तरह इस एरिया पे आई जस्ट लाइक दिस वन, ओके, फिर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, ठीक हो गया, और फिर इसने मूव किया डाउन साइड पे। अगर ये सेम सिनेरियो हुआ तो फिर क्या होगा, प्राइस मूव कर सकती है डाउन साइड पे इस एरिया पे। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ये मंथली है, तो द बेस्ट एरिया टू बाय वुड बी टू प्लेस एन ऑर्डर अराउंड this 210 to 24, okay, otherwise it all depends on this candle close. Now moving up, do we have anything else? Nisha, do you think BTC will reach 28k again? Please give opinion about VET, goodbye or not. Okay Nisha, I will now get back to you. BNB, let's take a look at the BTC right now. So Nisha, BTC here can easily go down to 28k because right now the candle is in the formation. Today is Tuesday and we still have 1 2 3 4 5 days left. Okay, still 5 days are left, and okay, sorry, we still have 5 more days left, and the candle still in the formation. Okay, so we have to wait for the this candle close, and then we can say that the price either going to go down below or going to move up. Right now 2 weeks of down movement, you can see in the past 2 weeks of the down movement, and after that BTC made a certain move. So if I go down to the daily chart here, let's take a look and find out the spots, find out the areas of resistance and areas. Here you can see we have got this area perfectly matched up here, this area as well. BTC has the most areas than any other coin. So if we take a look at here, let me show you, we have this area BTC. You see here, let me show you, let me zoom in a bit. You see how perfectly it bounced off, got rejected from this area. So it means
33,000. You know, it is a resistance now. It has become a resistance for now. 33,000. Sorry, let me turn on this one. 33,000. Okay, now this has become our resistance. Okay, now we need to break above 33,000 to $40. Otherwise we might be testing 28,000 easily. We might be testing this one, 27,000. Okay, so be ready for 27,000 as well. If this candle closes below the area, we're going down to 28,000 because it has been rejected from this 33,000. But we have to wait for the end, for the close of this candle. Okay, candle close is very important, otherwise we can't say anything. Okay, so right now candle closing is the main thing. If we take a look at the time, we still have got 6 hours to close, 6 to 7 hours. Okay, and in these 7 hours we have to wait. Okay, and on the downside we have yeah, we can mark this one as a strong support zone, 27,000 on the weekly one. On the daily we have this area as well, but it has been tested already. You can see it has been tested already. If we got a rejection from this area, we're going down strongly. So yes, it can go down to 28,000 easily. Now if we go back to wet, let me take a look at the wet coin. Let's take a look at the wet coin here, VChain. Okay, so what do we have here? The same pattern everyone is following, every coin is following right now, the same pattern. Okay, you see here we got a strong, these levels have been drawn few days ago, mind you guys, these levels have been drawn few days ago, and you see how perfectly these levels are getting respected. So Nisha, right now you see here, this candle closed above here, this candle closed above here. If I go back, this was the accumulation phase. What happened here? If we draw another level, this one. Okay, how beautiful is this one? How beautiful. You see here, swing low candle. Okay, this is the swing low candle. Okay, if I go and let me show you this one. Okay, this is the swing low candle. I have taken the lower of this swing low candle here, and this is the strong area. This is the strong resistance area, and you see we have a rejection from this area on the current analysis, current. Okay, so 0.080 is the resistance for now. Okay, it is the resistance for now. Again, the same for every coin. Wait for the confirmation, wait for the, you know, this level to get broken. You have to wait for every coin to break their local resistances. Simple. Okay, and on the downside, if we take a look at the support area, the support area would be around 0.06 to 0.05. This is the support area. See this one, 0.06 to 0.05. So if this candle, I think we might see some consolidation at this zone. Simple. But if it closes above, then you can place your buy orders here, and then the next move, the next order would be around here, 0. This one. Okay, the next target would be here. As I told you guys, just accumulate as much as you can, because on the longer run it's gonna benefit you. It's already down, guys. You see here, it's already down almost 80% from the all-time high. So all-time high, it can retest again. If we take, so you can buy around here, you can place your buy orders around 0.06, 0.05. It can go down to, like, you know, this one, 85% might be. Okay, so it won't be a problem. It is better to accumulate all the coins, all the good coins. Okay, like by, thanks by Rahul Kumar. Which site are you using? Told you already. So guys, do you have any other
request for the coins, please let me know. If you don't have any requests, then I think I'll turn off the the session for now. If you have any requests, please let me know. Please let me know. Now we are looking at the coin market cap right now. This is the BTC. You can see the coins. If we take a look at the coins right now, you see here BTC a little move on the upside. Okay, let's take a look at the dominance as well. Dominance is also very important. So what I'm gonna do, I'm gonna take a look at the dominance BTC.D. Let's take a look at dominance, how it is behaving right now. Okay, what do we have here, guys? What do we have here? We have this one. Okay, let's delete everything. Let's go to the monthly. Let's go to this one. Okay, this is the weekly. This is the monthly chart of Bitcoin dominance. Bitcoin dominance is very important. Okay, this is the area. First, we have this area of resistance, acting as a resistance, and now on the downside we can mark this one. Okay, and this could also be taken into account. Okay, if I go to the weekly one, let me readjust all the levels here. Let me delete this one again deleting this one, and if I take a look at the next BTC dominance region, this one, good area. You see how bounced off from this area. You see bounced off from this area. BTC dominance rising now, alts dominance going down. Okay, if we take a look at this one here, so with the next resistance would be around this area. Okay, around this area, 49 to 48%. Okay, so if I go to the altcoins dominance total, I will go for the total one. This is the altcoins dominance, guys. Okay, let me show you altcoins dominance on the monthly one again. I'm gonna go to check the monthly here, but I'm gonna go to the weekly one. Here we have the weekly. This is the altcoin market. Okay, a good way to predict the altcoins, how low can it go. So we still have the room, we still have a room for the altcoin market cap to down to this level. We still have the room. Okay, so alts can go down further. This candle is going to, this is very important chart, guys. Just go to the trading view, okay, and type down this one, total 2. Okay, this going to give you the analysis of the altcoins. If any altcoin you name it. Okay, if you want to predict the altcoins, just go to this one, and if you see spot here, then you can buy any altcoin around this spot. Okay, see here. So this is a very important chart. So next up we have this area, we have this area as well. Now I'm gonna move on to the daily one. If we take a look at the daily, yeah, we have this one as well. So I'm gonna mark this one, yeah, a good zone, yellow and dashed one. Okay, so right now you see the BTC, the total coin market cap here, it is in between this range. Okay, you see all other altcoins are following the same pattern like this one. So if this candle gets close above, we might see some pump in the altcoins. Okay, and we might see some pump to about if I go and narrow down, do we have any price range for this one? 15% pump can be possible, 10%, 15% pump is expected. If this candle closes above, then we can see 15% pump, and in the altcoins as well. But if this candle closes below this level,
then we might see another crash on the downside. So it all depends on these levels, on these, you know, these are the, we have to look for the multiple charts, total market cap, altcoins market cap, Bitcoin price, everything needs to be taken in account. अच्छा भाई, सलमान शेख साहब क्या कहते हैं? ब्रो, आई बॉट वी चेन एट 0.889, शुड आई सेल इट नाउ और बाय इट लो? निशा, थैंक यू, ग्रेट एनालिसिस, वेलकम निशा। अच्छा सलमान शेख साहब, अब आपके सवाल का जवाब देते हैं। ब्रो 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 ब्रो, आई बॉट वी चेन एट 0, आई थिंक आई जस्ट डिड एनालिसिस ऑन द वी चेन वेट, लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन. No, this one would be good. So you just bought around this one by 0.889, you can say around this area, 889, around this area. Let me move it around 0.889, this area. You see, you bought around the resistance at this area. Salman bhai, I think you should wait for the price to, you know, you can place your buy orders around here. Selling right now, I don't think so it would be a good option, because on the longer run, I already told you, already mentioned a few moments ago कि हम अपनी प्राइस से कितना डाउन है। यहाँ पे आप देखें ना, अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पर देखें तो देखें हम ऑलरेडी 78% नीचे हैं। तो क्या बेहतर हो नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पे होल्ड भी कर लेते हैं, इस एरिया पे आपने बाय किया है, देखें एग्जैक्ट एरिया पे बाय नहीं होता, कभी भी एग्जैक्ट एरिया पे बाय नहीं होता, हमेशा ही ऐसे ही होता है कि जिस एरिया पे आपने बाय किया होता है प्राइस उससे नीचे आ जाती है। आपने पेशेंस दिखानी है, थोड़ा होल्ड करके रखना है, ठीक है। और यस, ये है कि स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, लेकिन स्पॉट में स्टॉप लॉस तब ही यानी आप कर सकते हैं कि जब आपने हाई पे बाय किया हो, यहाँ पे बाय किया हो तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएं, इधर एग्जिट कर जाएं जी आप। प्राइस हम क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे ऑल्ट कॉइन्स जो होती है ट्रेड स्पॉट में, वहाँ पे आप जो है ना क्या कहते हैं करते हैं अपने स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आप लो पे हैं ऑलरेडी, हम देखें हम नीचे बॉटम के पास ही हैं, ठीक है, बॉटम के आसपास ही है, ठीक है। यहाँ से प्राइस अब मज़ीद आई डोंट थिंक सो, अगर गया भी तो 15 या 10% ही नीचे जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपनी एंट्रीज को जो है ना एवरेज डाउन कर लें, यहाँ पे आके एवरेज डाउन कर सकते हैं, इवन दो यहाँ पे आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। और जितनी भी एवरेज डाउन आप यहाँ पे कर लेंगे, ऑन द लॉन्गर रन आपका ज़रा सा भी मार्केट ऊपर गई तो आप प्रॉफिट में हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो आई वुड सजेस्ट कि सेल ना करें, होल्ड करके रखें। सेलिंग इज़ नॉट गुड। इस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूट जो हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब बाइंग ही कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो जब प्राइस या मार्केट नीचे गिर रही हो, वो टाइम नहीं होता, ठीक है। आपने बाई कर लिया, अच्छा अच्छे एरिया में बाई कर लिया, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप 0 पॉइंट इधर की बात करें, इट्स अ गुड एरिया, ठीक है। होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, होल्ड करना पड़ेगा आपको कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम इवेंचुअली मूव करेंगे ऑन दी अप साइड। सलमान शेख साहब, ये थी आपके लिए। तो एनीथिंग एल्स प्लीज़ लेट मी नो। ओके गाइस, बीटीसी, अच्छा बीटीसी का भी जो इम्पोर्टेंट जोन है वो ये है कि हमें ब्रेक करना पड़ेगा 33,000 को, अदरवाइज़ हम प्राइस में नीचे ही जा रहे हैं। अगर प्राइस नीचे जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे भी हम एरिया मार्क करते हैं, एरिया दिस वन एज वेल, और यहाँ पे मैं प्राइस को मार्क कर देता हूँ इस एरिया पे, तो वी हैव 30,000 दिस एरिया एज वेल, और नेक्स्ट अप वुड बी दिस वन 27,000, ठीक हो गया। तो वी हैव 3 एरियाज राइट नाउ। अगर तो प्राइस इससे ऊपर रहती है और इससे नीचे रहती है तो वो हम कंसोलिडेशन फेज़ में हो जाएंगे, ठीक है। फिर डिपेंड करेगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बाइंग होती है तो हम मूव कर देंगे अप साइड, बाइंग नहीं होती, सेलिंग होती है, तो वो हमें ले जाएगा $27,000 पर। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कहाँ हो सकती है, नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट अगर हम 4 आवर पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, 4 आवर चार्ट पे,
ठीक है। 4 आवर पे हम देखते हैं, बैक साइड पे जाते हैं हम थोड़ा सा, तो हम देखते हैं हमें सपोर्ट ऑफ कहाँ पे मिल सकती है सपोर्ट एरिया। ये भी है एक एरिया 25,000, 25,000 की तरफ डबल एरिया। तो नेक्स्ट एरिया यहाँ पे भी हो सकता है। ये मैं अब लोकल एरियाज ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं डैश कर दूंगा, डॉटेड कर दूंगा। और एक ये भी एरिया भी, इसको भी हम एक एरिया माना कह सकते हैं कि प्राइस इस एरिया पे भी जा सकती है 25 से 24,000 की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेली पे जाऊँगा और आई विल गो फास्ट फॉरवर्ड हेयर। और मैं क्या करूँगा अब जी, यहाँ पे भी एक लेवल ड्रॉ कर दूँगा डाउन दिस एरिया। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया मार्क किया जा सकता है। अगर हम 27,000 से भी नीचे आए तो इस एरिया को भी उसमें लाया जा सकता है। तो I will go for this one here as well. These are the areas. Okay, हम देखते हैं ये एरियाज को। Sorry, this one was not right. This one again, damn man. Okay, ये ठीक है। आप सीन देख लीजिए, अब क्या हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियोज क्या है। पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ बीटीसी ये है कि अगर तो प्राइस इस के दरमियान रहती है 30,000 और 33,000, तो हम देख सकते हैं सम कंसोलिडेशन फिर से रेंज में हो सकती है मार्केट। लेकिन ज़्यादा चांसेस माइट बी डाउन साइड के भी हैं। ठीक है, ऑल्दो वी हैव अ लॉन्ग वीक ऑन द अप साइड, लेकिन डाउन साइड के भी चांसेस हैं क्योंकि हमें रिजेक्शन हुई है ऑन द अप साइड। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम हायर लोज बनाना शुरू कर दें ऐसे। ठीक है, इस तरह हायर लोज बनाना शुरू कर दें, देन हम इस जो नेक्स्ट जोन में हम, क्योंकि अब नेक्स्ट जोन में एंटर हो चुके हैं, अगर हम देखें तो हम एक नेक्स्ट जोन में एंटर हैं। ये देखें जोन्स होते हैं ना, एरियाज होते हैं। ये देखें हम इस एरिया में रहे कुछ अरसे के लिए, हम इस एरिया में रहे, देखें हमने 2 दफ़ा डबल बॉटम किया और फिर प्राइस मूव कर गई अप साइड पे। ठीक हो गया, हम कुछ अरसे के लिए इस एरिया में रहे, ठीक है, कुछ अरसे में इस एरिया के लिए रहे। अगर हम उसी पैटर्न को देख रहे हैं तो देखें हम काफ़ी अरसे के लिए इस एरिया में रहे, लेकिन अब ये पहली कैंडल है जो हम इस एरिया में आ चुके हैं। तो हम अब इस रेंज में हो सकते हैं कि 33,000 से 27,000 की रेंज में हम मूव कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि हम 27,000 अब इजीली टच कर ले। यहाँ पे सपोर्ट बना सकती है बीटीसी, अपना बना सकता है इधर। लेकिन अगर हम ये एरिया भी ब्रेक कर देते हैं तो नेक्स्ट एरियाज ये वाले होंगे। तो ये अपने माइंड में आप ज़रूर रखिएगा, कीप डैट इन योर माइंड, क्योंकि बीटीसी के ऊपर ही सब ऑल्ट कॉइन्स का निर्भर होता है। ओके, विक्रमादित्य सलमान भाई का हो गया, विक्रमादित्य आदित्य ये में आएगा। एयर स्वैप और एमटीएल का कुछ बताओ, एयर स्वैप और एमटीएल। ओके, एयर स्वैप का चेक करते हैं जी। एयर स्वैप कौन सा है ये, आई हैवंट हर्ड ऑफ इट। ओके, यहाँ पे हम चेक करते हैं, हॉबी में है एयर स्वैप, बीटीसी के हिसाब से है ये। हम इसको हॉबी के हिसाब से भी देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको बाइनेंस के हिसाब से भी देखते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, बाइनेंस पे ठीक हो गया। ओके, एयर स्वैप पे हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है एयर स्वैप का। सिंपली आप देख सकते हैं एयर स्वैप ऑलरेडी नियर द बॉटम। सिंपल अगर हम देखें इसका प्राइस एनालिसिस, तो ये ऑलरेडी 89% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई भी नहीं, बल्कि यू कैन से द नेक्स्ट ऑल टाइम हाई लोअर हाई से। और इफ़ आई ड्रॉ द लेवल्स, लेट मी ड्रॉ द लेवल्स हेयर। अगर हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, ओके वी हैव दिस एरिया, सॉरी, अच्छा जी, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। एक तो ये लो हो गया, ये स्विंग लो है। ठीक है, एक ये है, ये एरिया ऑफ सपोर्ट कह सकते हैं आप इस एरिया को। ठीक है, ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट है जहाँ से प्राइस देखें रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से रिजेक्शन तो हुई है, लेकिन अब हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चाहिए ऑन दी अप साइड।
हमारे पास ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। ओके, यू सी दिस वन। तो अभी हम इस रेंज के दरमियान है, इस रेंज पे और इस रेंज के दरमियान है। कहाँ कहाँ पे है? अगर हम ड्रॉ करते हैं एक लेवल इधर, इस एरिया 0.197 और एक हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो प्राइस इज इन बिटवीन दीज टू लेवल्स, 0.19 और 0.09 लेवल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अप would be around this one. This is the all time low, or I would go for this one as well. Okay, तो राइट नाउ आप अपने ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इस एरिया पर अराउंड। ओके, I bought it when it was 41, I dropped to 8, I lost 86, I did not sell। क्या मुझे होल्ड रखना चाहिए? क्या ये वापस 50 रुपीज़ पर जाएगा? 50 रुपीज़ पर जाएगा। पहले मुझे 50 का पता लगे ना। INR है ना, आई थिंक USD टू INR पर पहले देखते हैं, क्योंकि मुझे उसके कन्वर्जन का नहीं पता टू INR। तो आपने बाय किया था, आप कह रहे हो कि क्या ये 50 पे वापस जाएगा? 50 रुपीज़ पे 0.67 पे, लेट्स टेक अ लुक। 0.67, यू आर टॉकिंग अबाउट 67 इज अराउंड हियर। ओके, दिस वन, दिस इज द एरिया। ओके, आई थिंक आप ये बात कर रहे हो 67। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ 67 कह सकते हो, या इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम इसको बात कर सकते हैं 50 रुपीज़ इन INR। ओके, अब इस एरिया की बात कर रहे हो कि क्या यहाँ से प्राइस वहाँ तक जाएगा। लेट्स टेक अ लुक, ये देख लो। अब आप इस वक्त जो करंट प्राइस है वो क्या है? 0.09। अगर हम वो भी देख लेते हैं, 0.09, तो इस वक्त ये 6 रुपये पे है। ठीक है, इस एरिया पे ये 6 रुपये पर है, इस एरिया पे अराउंड दिस वन। तो 500% जिस तरह का ये चार्ट शो कर रहा है, इसको रिक्वायर्ड होगा। अगर हम इसका वॉल्यूम देखते हैं एयर स्वैप का, लेट्स टेक अ लुक एट द वॉल्यूम ऑफ एयर स्वैप AST। हम देखते हैं इसका वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या है? बहुत लो वॉल्यूम है गाइस, 1.1 मिलियन ओनली, बहुत लो वॉल्यूम है। अब मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि देखें, जब प्राइस थी इसकी आपके मुताबिक कहाँ पे, आपने कहा 0.67, लेट्स सपोज हम ये एरिया है, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हुआ जी? लेट मी शो यू दिस वन। अगर तो ये लो कॉइन जेम है तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा, दिस एरिया। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन हिट किया 2018 में। ठीक, उसके बाद 2018 के बाद ये कब वापस आया है? इस एरिया पे, यहाँ पर आया। अब देखें, जब कॉइन स्टार्ट में होता है ना, तो यूज़र्स होते हैं थोड़े। ठीक है, जब यूज़र्स होते हैं थोड़े, तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी प्राइस को पुश कर देता है ऑन दी अप साइड, अंडरस्टैंड। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता यूज़र्स हो जाते हैं ज़्यादा, तो क्या होता है कि वॉल्यूम भी उसी तरह बढ़ना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम भी उस तरह बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। अब यहाँ पे भी देख लें कंपैरिजन, यहाँ पे 1.1 मिलियन डॉलर पे प्राइस 0.68 को हिट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया पे 11 मिलियन डॉलर्स पर यहाँ पे प्राइस हिट किया। तो क्या हुआ? 2018 में 1.1 मिलियन पर हिट किया, 2021 पे क्या हुआ जी? 11 मिलियन पे, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स वॉल्यूम ज़्यादा हुआ। क्योंकि यहाँ पे यूज़र्स थे थोड़े, यहाँ पे यूज़र्स थे ज़्यादा, तो ज़्यादा यूज़र्स आए, ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो हुआ, तब ही जाके प्राइस ऊपर गई। ठीक हो गया। अब क्या सीन है? अब आपको इतना ही वॉल्यूम चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इससे ज़्यादा ही चाहिए होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन टू 20 मिलियन। ठीक है, तब ही ये वॉल्यूम, तब ही ये प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये है इसका फंडामेंटल, ये है इसका फंडा। लेकिन अच्छा है, बाय कर सकते हैं आप इसको इस लेवल पर, और ये करंटली किस लेवल पे? 685 पर है।
और ये डिपेंड करता है इसके, है भी एथीरियम चेन पे है और दूसरा दूसरे चेन पे है। तो ये है कि आप इसको बाय करके एवरेज डाउन करके इस कॉइन से निकल आए, क्योंकि आई डोंट सी अ थिंग, क्योंकि ऑलरेडी बाइनेंस पे लिस्टेड है और कोई ख़ास प्राइस मूवमेंट भी नहीं हो रही इसकी। तो यस, यू कैन नैरो डाउन योर एवरेज डाउन योर एंट्री। सेल करने का फ़ायदा नहीं है इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल पे है। एवरेज डाउन ऐसा कर लें कि प्राइस आपकी इस एरिया में आ जाए, एवरेज डाउन करके इस एरिया में आ जाए, देन आप इसको जब ये प्राइस इधर पहुंचे तो सेल कर दें। क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि उस कॉइन में इन्वेस्ट करें जो हाई वॉल्यूम कॉइन है। ओके, 2 इयर्स में जा सकता है, 50 इयर्स। यार देखो, 2 इयर्स में इसलिए मैं नहीं कह सकता आपको कि 2 सालों के अंदर कितना। देखें, और भी बहुत से क्रिप्टोज आ जाएंगी। ऑलरेडी ये देख लें, आपके पास 10,000 क्रिप्टोज हैं। ये देखें, 10,000 ऑलरेडी लिस्टेड हैं। कितने कॉइन्स आए? TLM अभी लेटेस्ट आया, क्या हुआ उसके साथ? अब आपके साथ देखो TLM कॉइन, अभी मैंने रिसेंटली क्या बताया इसका, देखो ये भी 0.08 पे ही मूव आउट कर रहा है। देखो अब इसकी प्राइस देखो कैसे नीचे आया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कितना नीचे गिर चुका हुआ है। ठीक है, तो बहुत से कॉइन्स हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं। तो काफ़ी टाइम लगेगा, कह सकते हैं काफ़ी टाइम लगेगा 50 रुपये पे जाने में। ये डिपेंड करता है इनकी टीम कैसी है, डेवलपर्स कुछ एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं कि नहीं लेकर आ रहे, ये डिपेंड करता है टीम के ऊपर। ओके, सो गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? प्लीज़ आस्क मी, आई एम लाइव टुडे। MTL का क्या है जी? MTL भी मैं आपको बता देता हूँ। MTL मेटल अच्छा कॉइन है ये भी। ओके, वी हैव द MTL हेयर, बहुत अच्छा, अच्छी बाइंग एरिया में है ये भी, अच्छे बाइंग जोन में है। मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ, प्राइस को करता हूँ यहाँ पर। ये एरिया है और है ये एरिया, अच्छा एरिया है, बाइंग एरिया। बाय कर सकते हैं इसको, अच्छे एरिया में है ये, बहुत अच्छे एरिया में मेटल, क्योंकि इसका यूज़ किया अच्छा है। 312 पे है, 14,000 इसके बंदे हैं ऑलरेडी। ये लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप में। और इसकी सप्लाई क्या है देख लें, सप्लाई इसकी मेन थिंग है। देखें, सप्लाई 98% सर्कुलेशन में है। ठीक है, तो सोन इसकी सप्लाई जब कम होना शुरू हो जाएगी, बर्निंग होगी, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सप्लाई जब तक 100% नहीं पूरी होती तो अक्सर ऐसा ही होता है कि प्राइस नीचे आती रहती है। तो इट्स अ गुड बाय। इसको हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में मेटल कॉइन जो है ना वो ऊपर जाएगा। वेरी नाइस, अच्छा चार्ट शो कर रहा है ये अभी हो सकता है कुछ अरसे के लिए यहाँ पे ही कंसोलिडेट करे। ठीक है, कंसोलिडेट कर सकता है इस एरिया में, लेकिन उसके बाद ये पंप ज़रूर करेगा और पंप बहुत ज़बरदस्त करेगा। तो मेटल इज़ अ गुड बाय। अगर हम देखते हैं यहाँ से 91% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। सो इट्स अ गुड बाय गाइस, गुड बाय एज वेल। अच्छा जी, गलती हो गई सर, कोई बात नहीं। MTL फिल कॉइन से खरीद के अगर एयर स्वैप 100% लॉस में आ जाए तो वैनिश हो जाएगा क्या? नहीं, वैनिश तो नहीं होता, वैनिश नहीं होता, वैनिश वाला चक्कर सीन नहीं है, वैनिश वाला सीन नहीं होता। ज़ाहिर बात है, बाइनेंस पे जो कॉइन लिस्ट होता है वो आखिर कुछ टाइम के लिए प्राइस, जैसे आप देख सकते हो कि BTC अभी नीचे है। जब तक BTC नीचे रहेगा, जब तक BTC की प्राइस, ये देख लें, यू कैन सी द BTC प्राइस है। BTC जब यहाँ से रिवर्स मारेगा ना, यहाँ पर आता है, रिवर्स मारता है, मूव अप करता है। ठीक है, मूव करता है, तो तब तक सारे कॉइन्स बॉटम पे ही रहेंगे। ठीक है, इसी तरह मूव करेगा ऊपर। ठीक है, कुछ अरसे के लिए कंसोलिडेशन में ये जा सकता है। कंसोलिडेशन फेज है इसका, ये कंसोलिडेशन फेज, वी माइट सी सम कंसोलिडेशन लाइक दिस। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मूव करते हुए ऐसे जा सकते हैं ऊपर ऑन दी अपसाइड। तो जब तक BTC स्टेबल नहीं होता, एक सर्टन लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक जो है वो कॉइन्स इसी में रहेंगे। देखें, अभी BTC एक अच्छी कैंडल बना रहा है, वी माइट ब्रेक 33,000। अगर ये क्लोज होता है 33,000 से ऊपर तो ये एक अच्छा साइन होगा, अच्छा बुलिश साइन होगा कि ये जस्ट हाली वीक थी डाउन साइड पे। तो हम देख सकते हैं। ओके, सॉरी,
और नेक्स्ट अप हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। ये तीनों कॉइन्स मैंने 3 मंथ्स पहले ख़रीदा था और अभी लॉस में, देखिए लॉस में मैं भी लॉस में हूँ, आपकी तरह मैं भी लॉस में हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, देने का है और होल्ड करने का है। होल्ड करके रखो, इवेंचुअली आ जाएगा। फिल कॉइन जो है वो भी अच्छा कॉइन है, अगर आप बाइनेंस पे जब भी जाते हो तो बाइनेंस पे ऑलरेडी लिस्टेड होता है, ऑलरेडी टॉप पे। देखें अच्छी इसकी, ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे भी बाइंग हो जाए तो बहुत प्यारा है, क्योंकि आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ये 428 पे। अगर हम इसकी सप्लाई देखते हैं फिल कॉइन की, तो सॉरी, fill coin, what do we have here? You see here the circulation supply 81 million इसकी सप्लाई है, तो बहुत अच्छा कॉइन है। Okay guys, do we have any crypto news? Let's take a look at the crypto news. What news are in the market right now? Crypto bans will not stop wider adoption. Crypto bloodbath, 350 billion in market cap gone in 48 hours. Oh my god. Guys, just take a look at this news. You see here 350. That's amazing, man. Crypto bloodbath, $350 billion in market cap gone in 48 hours. Why? If we go down, you can see here Bitcoin and altcoins alike. The entire crypto space takes a beating, losing $350 billion in market cap in just 58 hours. As a result, the market cap is just around 1.2 trillion today, the lowest it has been since the start of the year. The Bitcoin price dropped below 30k due to the FUD caused by the China's recent crypto crackdown movements. Guys, China थोड़ा सा ख्याल कर लो, क्यों हमारे पीछे लगे हुए हाथ धोकर। China's FUDs, 3 times they created the FUD and 3 times BTC dropped. But it is a manipulation, you see, manipulated move, as it usually is the case. The other coins also dipped in the response to that. And you see here, all coins suffered double-digit losses. You see here, the crash seems to have hit the alternative coins pretty hard, as all the major ones seem to be in the red by the double-digit percentages. You see here, BTC, Ethereum, BNB, Cardano, XRP, Doge, DOT, BCH, Uniswap, LTC, Link, Matic, Solana, WBTC, Wrapped BTC, Theta, XLM, ICP, ETC, VET, Phil, TRX, and many others. Okay, so if we go down, Ethereum is down almost 12%. So this is the news article. Okay, crypto crash trends on Twitter as BTC falls below. So let's take a look at that, the BTC here, what are the, Bitcoin crash. Let's take a look at the Bitcoin crash on the Twitter, and let's take a look at here. What do we have? This one, we have a meme. Bitcoin holders who have bought it at more than 60k plus. So guys, some of you must have bought BTC at 60k, just like this person. You must be feeling like this one, no feelings at all. It must be that like you are. Okay, and here it is, the crypto investors waiting for the market to recover. Okay, let's take a look on the downside. I will hold till my last breath. Don't you hold till your last breath. Sayyidul Mamoon, I missed Matic at 0.9. Will it come back again, you think? I think let's take a look at the Matic. A lot of fans have told, कुछ दिन पहले मैंने बताया था अपने दोस्तों के मैटिक से एग्जिट कर लो, मैटिक इज़ नॉट अ गुड बाय। बाइंग अभी मैटिक की ठीक नहीं है, क्योंकि जब एक पैसा मार्केट में एक कॉइन पे आता है तो फिर उसके बाद वो पैसा वहाँ से निकल जाता है, जब उसमें से लोग प्रॉफिट या इंस्टीट्यूट्स प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बाइनेंस पे हर हफ्ते में एक कॉइन जो है ना ट्रेंड पे जाता है, कभी डोज चला जाएगा, कभी मैटिक, कभी सोलाना, कभी XRP, कभी कोई और कॉइन। तो क्या होता है, वो एक हफ्ता टॉप ट्रेंड पे रहता है, उसके बाद प्राइस आ जाती है नीचे। तो वो एक हफ्ता ही होता है, आपको उसमें से प्रॉफिट कमाना भी होता है और उसके बाद निकल जाना होता है। देन आप वेट करते हैं नेक्स्ट एंट्री के लिए, तो यही चक्कर होता है।
तो 0 पॉइंट की आप कह रहे हो 0.90 की एंट्री आपने मिस की है। नेक्स्ट एंट्री आप बाय कर सकते हैं 1.05 पर। ये वीकली में मैं दिखा रहा हूँ, डेली में मैं चेक करता हूँ डेली पे। वेल लेकिन डेली पे अभी जो कैंडल बन रही है ये इनडिसाइसिव है, यानी मार्केट की ना अप साइड ना डाउन साइड, ये कोई एक साइड नहीं दिखा रही इस वक्त, ना अप साइड पे है ना ये डाउन साइड पे है। ये है ये शो करती है कि हमने एक लेवल ब्रेक किया, फिर हमने रिजेक्शन ली उसके उस लेवल से, लेकिन डाउन साइड पे भी रिजेक्शन है, तो वी माइट बी इन कंसोलिडेशन, वी माइट सी सम कंसोलिडेशन। तो अभी जो सपोर्ट है इसकी वो यहाँ पे बन रही है 1.0579 पे। जब तक हमें क्लियर इंडिकेशन या कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक अनफॉर्चुनेटली प्राइस ऊपर या नीचे का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि आप अपनी एंट्रीज को नैरो डाउन कर सकते हैं, लेकिन देख लें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्राइस देखें आप डाउन ट्रेंड पे है। स्विंग हाई बनाया, फिर लो, फिर लोअर स्विंग हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर अगेन लोअर लो बनाया, फिर प्रीवियस से ये रिजेक्शन हुई, फिर अगेन ठीक है यहाँ पे फिर रिजेक्शन हुई, फिर अगेन। तो वी माइट सी सम मूव इस एरिया पे। मैं देख रहा हूँ कि प्राइस शायद जाए इस एरिया पे, ये एरिया बन सकता है अराउंड 1.5 क्योंकि ये स्विंग हाई है। तो इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकती है 1.312 अप्रॉक्सीमेटली दिस एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक एरिया 1.39 एज वेल। तो ये रेजिस्टेंस भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है इस कैंडल के क्लोज पे, क्योंकि जब इस तरह का सीन हो, जब देखिए बॉडी छोटी है, बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है, तो इट मींस जब लो बॉडी कैंडल्स होती है ना तो वो होती है कि इनडिसीजन इन द मार्केट होती है। ठीक है, लो बॉडी कैंडल्स, लो बॉडी या स्मॉल बॉडी, सॉरी स्मॉल बॉडी कैंडल्स ये शो करते हैं इनडिसीजन। ठीक है, इनडिसीजन इन द मार्केट। ठीक है, बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो क्लियर इंडिकेशन था कि सेलर्स जो है ना, बियर्स वो कंट्रोल में है, लेकिन ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये कैंडल शो कर रही है कि बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं प्राइस को पुश करने में। अगर तो हैमर कैंडल हो ना, हैमर कैंडल जस्ट लाइक दिस वन, कि लॉन्ग विक हुई और ये देखें यहाँ पे क्या हुआ। अगर हम इसी कैंडल को स्टडी करते हैं, देखें देखिए प्राइस आई नीचे, आई, बायर्स ने बाय किया, यहाँ पे आके हाई बनाया, फिर नेक्स्ट कैंडल नीचे गई और यहाँ से विक मारी, रिजेक्शन हुई, कैंडल क्लोज हुई यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल आई, ये इसने इसको हायर बनाया, इससे हाई बनाया, इस कैंडल से हाई बनाया। तो ये इंडिकेशन थी कि हम मूव करना चाह रहे हैं ऑन दी अप साइड। ठीक है, तो जब इसने यहाँ से भी मूव किया तो ये जो सही एंट्री की क्या कहा जा सकता है ना, वो ये था जब कैंडल ने यहाँ से इसको प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया और फिर आप देख लें कि कैसा मूव किया ऑन दी अप साइड। ठीक है, अगर हम इसी तरह स्टडी करते हैं बाकी कैंडल्स को भी, ये प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, डबल रिजेक्शन हुआ, डबल बॉटम हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन गई कि यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने देखी कि विक्स आ रही हैं, रिजेक्ट हो रहा है इस एरिया से, सपोर्ट एरिया से, तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग की, फिर प्राइस ऊपर गई, ब्रेक किया अपने प्रीवियस स्विंग हाई को। और अक्सर होता है कि जब प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो प्राइस नीचे आती है उसको कंफर्म करने के लिए। तो बुल ट्रैप एज वेल, स्टीफन थियो, bull trap, you can call this one as a bull trap as well. Yeah, bull trap. If we take a look at the PTC chart right now, you see we have a wick on the downside, wick on the upside, small body. You see here we have had this candle before, small body candle, not not a big body candle, so you can call this one was not a clear indication. And if we go back here in the previous, yeah, we got rejection from this here, yeah, then you see the next candle came down and got rejected, and we must have a strong volume on the downside, you can see here. So Stephen Theo, okay, bull trap.
So guys, do you have any other questions? I think it's been let me check. How long is it? Yeah, it's been 2 hours and 14 minutes. Okay guys, do you have any questions? Please let me know. If you have any other questions, then please let me know. Okay, let me know in the comment section, and if not, then I will open this chart for you guys so you guys can easily see. So for now, I will take some break. I will back in 15 minutes. If you want to ask any questions, please ask them in the comment section. I will be back in a few minutes, and until then, this price chart is gonna refresh on its own, and then you can take a look at these charts as well. So I will be back in few moments. Until then, this chart is going to continue. Okay.